तशीची एक टुर्नामेंट जाऊ कशाला रीत्या टुर्नामेंट मागशी सकड जनाला हात असतात तशीची टुर्नामेंट आहे तसल जनाक आतिथ्य एक प्रमुख विषय त्या विषय विषय सुरवेर येता आमका या टुर्नामेंटांतू जेवणाची व्यवस्था केलेलं तसल्या जेवणा विषयारी सहकार केलेलं तसल्या आमगेल्या बॅकबोन्स म्हणून येतं आमगेल्या बॅकबोन्स जाऊन कामत कॅटरिंगाच्या सुदमाम मछली हाच्या विख्यांना प्रतिज्ञा कॅटरर्साच्या गुदीबाई अरुण कॅटरिंगाच्या श्रीनिवास कामत हांका डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हांगेल तर्फेन हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगताची तशीची या टुर्नामेंटात मॅन ऑफ द सिरीज दिलेलं तसल्या एक स्कूटर ब्रँड न्यू स्कूटर दिलेलं तसल्या श्री अनगा सुझुकी तशीची एमर्जिंग प्लेयराक मोबाईल दिलेलं तसल्या दीपक मल्ल्याण्णा तशीची बेस्ट बॉलर्स बॅट्समॅन हांका इयरफोन दिलेलं तसल्या महामाया एजन्सी श्रीधर अण्णा हांकाई आणि आमका मॅन ऑफ द मॅच प्रति मॅच मॅन ऑफ द मॅचाक इयरफोन दिलेलं तसल्या आमगेल भरत अण्णा हांकाई डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हांगेल तर्फे जावन हृदयपूर्वक सांगू इच्छिता तशीची मॅच आमक सहकार केलेलं तसल्या सकड जनाक हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता. So thank you so much. We are coming to the very important match, just like a semi-final, do or die situation for both the teams. After weekend, Sports Club are qualified for the qualifier number 2 and winning the eliminator. But Viranjanaya, after they lost their first match in qualifier number 1 against Veera Venkatesh, they are looking towards the second opportunity, second chance, and winning the toss, selected the ball first. Here comes the first delivery from the commentary box, and Rohan Nayak will be the striker. Left arm over the wicket. First of all, batter shuffled across the line of the delivery, and the intention to get that one into the mid-wicket region, but not really able to get the timing proper, but good enough for him to rotate the strike to pick the single and first run for his team as well. And Weekend Sports Club, what an outstanding journey for Weekend Sports Club, but not an easy journey for them to come to the qualifier number 2. They are absolutely faced some hurdles. They played some good cricket, and altogether they deserve the place in this time off the back foot, and played it nicely down to mid-off region all along the stroke. They went for a single. Shivanand is also off the mark. In the previous match, he's played a very good innings for his team, and you know exactly this is a one more match where they need to give their 100% to get into the mega final. The dream of these two teams to come to the finals, and wait and see which team has got the luck, and of course effort is more important than the luck. Here comes left arm over the wicket, balls played it nicely down to mid-off range, and they're going for the single. Chance of run out is created. Easy opportunity because the ball which came straight to the hands of mid-off. Slight a bit of urgency shown there by the fielder at mid-off. Otherwise, opportunity is created for the run out because Rohan Nayak already is given up. You know exactly he's running towards a dangerous end, but fortunately for him is the fielder is misfielded. So 3 balls and 3 runs so far from this first over of the power play. Karthik Nayak. After balls, lovely delivery again. Just wanted to make room to play the shot. Very lucky indeed. Shivanand has got a bat onto that in the last moment. And before the fielder from third man to field the ball, ample time for the batter to complete the single with that single score. But Namozant 4 on the board without loss of any wicket. Outstanding cricket tournament you have witnessed in a 2 days day and night cricket tournament. The season 4 of Panthers Super League 2025, which is proudly presented by Deadly Panthers. This UCC cricket ground, and we are watching the last that qualifier number 2. This time hit that one right from the middle of the bat into that dugout. Magnificently struck. Well, just I want to see that how quickly he's managed to reach that bounce of the delivery. It's not as easy stroke to play in the book because he need to drag the ball from outside the line of off stump
to get the distance is not so easy. What a shot. Outstanding cricketing stroke here from the batter Rohan Nayak. And straight away they got a double figure, 10 without loss of any wicket. A good comeback. Very good comeback here by Karthik Nayak. You know exactly, did the mistake, the one mistake which is costing, and is absolutely disappointed because economy which is 10. And Weekend Sports Club, once again they got to start what they really wanted. 10 without loss of any wicket. Viranjana cricketers in the qualifier number 1, they faced the defeat against the team Veera Venkatesha Warriors. Have to come out from that defeat. Of course, whatever happened in the previous match, that's a past, and they have to be deal with the present. Of course, learning from the mistake is so important. Whatever the mistake you did in the first match, don't want to repeat the mistake here. They now need to come with the fresh mind, the positive frame of mind. And of course, then only they can be in the final. And at the same time, Wicked Sports Club, their match after match are looking at a total different team. They are galvanizing their level of confidence with the every victory they got. Because it's not an easy victory, they hard fought victory for them. And 10 without loss of any wicket. Here comes the first delivery. Right arm around the wicket. Starts with the warm-up delivery of the evening, which has gone far outside the line of off-stump. Pawan Telang, one more very useful bowler. You know, you need to understand that what is his role for his team. And coming in the second over of the power play, after that 10 runs in the first over. You need to be very accurate in the line and length. And again, coming from the far end. Oh, lovely delivery, beautifully. The swing and miss. Again, almost pitching it short quite deliberately, seeing that Shivanand just wanted to go for the expansive drive. This is what the bowler have to learn, that understanding the batter's strongest point, understanding the batter's weakest point. And this is where you can get some success. It's not that you are how much you getting pace in your bowling, but keeping the line and length so important more than the pace. This time he swings it hard and one bounce into the fence for 4 runs. This time he got the ball right in the slot. One of his zone, what we are talking about, the pitching it short, and Shivanand is all much ready for that. To swings pretty hard down to mid-wicket boundary for 4 runs. Much required boundary. 15 without loss of any wicket. Very important player, Shivanand Kamath. He loves to go after the bowler, but after that consecutive 2-dot deliveries bowled by Pawan Telang in this particular over. Then he managed to break the shackle. And what a shot that, isn't it? Of course, short pitch delivery, but batter have to get that short pitch very quickly. Getting the position, and bat speed is so important when you're playing that full shot. Getting into the bounce of the delivery is so important. And more than anything else, the placement is good enough. Straight down the ground. No need to run for that. One bounce into the fence for 4 runs. As straight as an arrow. This is the one area. It's very difficult for the opposition team to set a field. There is a long off. There is no long off. In fact, inside the ring. Once Shivanand is lofted that ball over the head of the bowler, definitely it's going to be a boundary. Excellent 2 cricketing stroke there from Shivanand. Takes the score into 19. Lovely Yorker length delivery, negotiated very well by Shivanand in the last moment, getting his bat in right time. Otherwise, that ball is going to crash the midland off stump of the batter. And altogether, good cricket there from Shivanand. The last 3 deliveries managed to get the runs what they really wanted. Already 20 without loss of any wicket. In the over number 2 is in progress.
Around the wicket, right arm. Again pulls that one nicely down to deep square leg and mid wicket, in fact, in front of square by Rohan Nayak. He picked up a single, one more good over. 11 came from this over. 10 from the first, 11 from the second. That means the power play over, which belongs to the team Weekend Sports Club. They got 21 at the rate of 10 and half runs per over. Sponsors एक धन्यवाद दिवचे समयो. Tournament आचा Man of the series Dilal Tasala Amgala Sri Anaga Suzuki. Man of the series एक brand new scooter दिलेलं तशीची emerging player Hanka mobile दिलेलं दीपक मल्ल्या हन्नी. Best batsman bowler एक नवीची earphones महामाया एजन्सी श्रीधर हन्नी दिलेलं. भरत अण्णानं प्रति man of the match एक earphones दिलेलं. तशीची प्रति man of the match player डायरी श्री महामाया ट्रेडर्स चेतन अण्णा हंगेला सपोर्टा निमित्त मिळालं हंका डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हंगे तर्फेनं हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगू इच्छिता. The bowling started the third over. Welcomed by the big six. Welcomed by the big six. Rohan Nayak this time got that short pitch delivery right from the middle of the bat. Dispatched it and deposited into the branches of a tree. Well. Just have a look at the short pitch delivery. How quickly he managed to get that one. Fantastic pull shot and the ball is landed into the branches of tree. Once again swings and miss. Wicketkeeper also missed it. Opportunity for the pummel from the fielder. They're grabbing this opportunity for the misfield to come back for the second. With that couple of runs, Koban moves on to 29 on the board without loss of any wicket. Inside edge of the bat, off the batter. And here comes next ball. Again, lovely delivery, change of pace from Ajay Kamath, but watched very well by Rohan Nayak. Just judging that the back of length delivery very well, and field placed that one down to short mid wicket region for a single. This is the dugout of Weekend Sports Club. They're very happy to see the scoreboard. This time they're very happy to see the scoreboard. Now they're too much happy to having that six. What a magnificent six. Well, what a stroke there from Rohan Nayak. Well, just cite some kind of confusion there about that. And just have a look at it in replay. This is absolutely hammers that one. Gone high and handsome. That was hitting something. Again, that's the branches of a tree. Looks like. And ball landed inside the ground. But it's a clean hit. As clean as a whistle. 6 is a score. Oh, one more. This is better than the previous one. And Shivanand looks like, I think he's a fielder. He saved that one. My goodness. This is one of the longest part of the ground. As per the dimension of this cricket ground is concerned. He's choosing one of the longest part. Just have a look at it in the replay. The ball is going and wonderful effort there by the fielder in the deep. Saving certain 6 and saving the 4 runs for his team. It's 38 on the board. And that's what Sivanand is looking very aggressive. Along with Rohan. They are complementing each other very well. 19 and 18. Swings and missed. This time more aggressive. The reaction came from Shivanand. But any of the 17, one more big over which comes into play. After completion of over number 3, it's 38 on the board without loss of any wicket. Weekend Sports Club are looking solid with the 12.67 runs per over. And before the over number 4 will going to start here, time to change in wise. I would like to invite once again Sunil Kasargod for the further explanation of the match in English. Thank you. तशीची मॅचाच्या दिवसू आमका खाण जेवणाक स्पॉन्सर केलेलं तसला आमगेला कामत कॅटरिंगाच्या सूद मम मछलीच्या वीकेंड
અરુણ કેટરિંગા છે. After completion of 3 over, that is what a fantastic scoreboard is a 38 without wicket. It's a wonderful partnership. Rohan Nahik and Shivanand. They got 18 and 19 in the stand. It's a beautiful, massive sixes in the one side as well. And both are playing in a good understanding and a good partnership. And still on the crease. That is a terrific opening partnership with that at the moment. And now the starting of the fourth over. Then excellent matching of this last two matches. Going on in this wonderful tournament. This match winners will be the final. Now there's a beautiful starting this weekend sports club in the moment of the good evening for this wonderful lighting set here in Mangalore. Now the lot of scouts enjoy the game, and now it is starting the fourth over. Now into the attack. For one, there's a beauty. The dot ball again. That's the not chance for the run in the still 38, and that was wonderful moving on to the starting by the bowler. Now Pawan Talent into the bowling attack. And now it's a look at the steps. It's coming in the long steps in this inside the circle line. And the starting this. And once again the back into the dot ball. The terrific straight to the wicket keeper. What happened this time is countability that test the bat. And now this time the two balls are dot still 38. And now the starting is superb in the three ball auction process. Now the two ball is already gone in the no score here. Still 38. Terrific Panthers registered Hangel Terpena Hridaypurvak જાવનો ધન્યવાદ સંગો ઈચ્છી પાવતા. And now the third time the same batsman here. This time it's a drive and the ball going to the couple of bouncers and fielders there. Now the way to the signal. It's a boundary. Now there's a misfielding. That's a beauty. Now the third ball came in the scorecard. Now the score is the 42. Terrific gap and the finding that at the moment couple of balls into the boundary line as well. And now the scorecard is a 22. And then Rohan Nayak is a super player, is a man of the match in the previous match. And again is a dot ball after the boundary. And as a not connecting the ball as well as a terrific bowler from the side is a Pawan. Another toss won by Viranjanaya, cricketer selected to field first and giving it the more runs in the 3 overs. The CCM 2 Mamaya group such a and a fabulous starting by the both and no damage at all. And the two players took the praise into the stand for this moment. And now once again to the batter. Then the full toss and the chance to call. It is a well try and once again to the file. And now there's a boundaries bell. The second round came in the over. And the misfield has made a long on. And there's a good shot by the man Rohan Nayak. And look at the screen, not stop the ball, doesn't carry. Well, try the field. And the second round coming in that. And the scorecard moving on 46 without wicket. What a shot. The couple of boundaries here. And now the last time in this over number 4 here. And the starting is a very start as the 2 balls, a dot and the boundary and a dot. And now the boundary and the 1 ball left in the over number 4 into the first innings of the match. Once again the Rohan in strike. And it's a better stop and it's a good finish by the over number 4 completed the Pawan. He got 8 run, no wicket, that's a figure. End of the 4. Now the still 46 without wicket. What a partnership going on, no damage. And look at the once again talking about the both the players. Now 2 over left in the over number 6 over match, and that's important. Viranjanaya cricket elected to field first, won the toss and a good going and a good cricket here in Mangalore. Deadly Panthers registered Hangel Terpena Panthers Super League 2025 is one match after this in the final. The CCM Gelo 2 Mahamaya group such a Chaitri Shanda Amgelo Tonga Sachi Hani Vediki Riono Hasin Jao Kamun Sangunu Nimurgetaji is on 19 and Rohan Naik played in 26 from just to 14 ball, a massive 6s and boundaries as well. And now the bowler's name
Ganesh. तशीची His चैत्रेश ball अण्णाक commentary Deadly box Panthers end District is a new Hangel bowler coming into the हृदयपूर्वक attack. जाऊन Another bowler, talent स्वागत सांगू and इच्छिता experience coming into the. He will be the break the partnership. Wait and see what will he do at the moment. Another good action. Look at this, and it's a big one. No doubt about that. It's really a big one. That's a very good start at the 5th over now. It was a powerful, that is a result of maximum in this mid-wicket region. That is a powerful, and one more 6 ahead of the scorecard. Now the score is past the 50. Once again, beauty. Look at the screen. What a timing. And now continue ball right over the wicket this time. Down the ground, fielder there chasing the ball, and the batsman complete the single very nicely, very cleanly. 25 to Sivan, and then Rohan Naik 26. Well played. It's an amazing starting. 53 for Nalos. Third time. Rohan this time in the crease, and is again a chance to there, and one bounce into the main stage. That is another one, and 6 a signal by the main umpire that splattered it was straight to the line, and wonderfully taken back to back 6. This time is a Rohan, and the first ball facing that, and the 6 ball runs added that 59. Once again to the danger man. Again is it right inside edge. The ball was going the back. And the single. The one more tally. 59. There is the highest partnership in the tournament so far. 60 run, no wicket. That is a terrific batting. What an understanding. Rohan Nayak, Shivanand. Again it's a beauty. Now the beautiful Sanders bin came. That's a massive one. The longest 6. That is the biggest. Look at the replay. What a timing. Beauty, power. Also the ground. That's the longest distance in the ground. That is another big one. Another 6. And 66. The last and is a gone, and they take the wicket, break the partnership. 66 for 1. Finally, take the wicket. Is a wonderful right off stump. That's a good finish at the moment, and he's gone. I think Shivanand is back into the pavilion. Now the broken the partnership between these two. The wonderful is 66 for the loss of 1 wicket still after completion of 5 overs. He got the wicket, and 1 over to left, last over coming up for the scorecard. This is the highest partnership break this. Now the 60 is the first highest score of this tournament. Well played. And Rohan Nayak is a good support given him, and a new man coming, Gautam Pai, just to join now, is the number 3 in the crease. Sorry, Ramnath Bhatta is coming into the attack in the final over. What a batting, what a start, what a score. Look at the scorecard, 66 for 1. Now the Ramnath Bhatta bowling in the last over. The wonderful foundation for the scorecard. And there's one straight on the ground. Again to the beauty. Field under. No chance. That's a 6 line. Yes. Now starting again. And all the ballers is finished. Now the punish the batter. And the terrific timing. Beautiful in the stand. Over the big one. Now the score. Moving on, 72. Once again in the air. This time it's a trouble bowler under that. Straight to the man, is no mistake. And is gone. The second down. Another score is a 72 is a very good big score and a good start.
And going for the big one, and the ball was top edge in the air, straight to the man at the ball in the middle. And one more wicket, losing the time for the score is 72 for the loss of 2 wicket after 5.2, 2 over completed, just 4 balls to go in the first innings of the wonderful game. The Viranjanaya cricket is on the toss, elected to field first. This time is a wonderful night in this here in Mangalore. And now this new man, Deepak Kamath, coming in, and the two openers are already back the side. Is a well played the both batter, and is a dot ball after the long down coming here. And now the third ball of the 6th over. And now 3 balls to go. The new player at the crease and not control him. The two experienced player already back and well played is a good foundation to the scorecard. And the 60 run is a well partnership in the opening stand. The both was playing in the terrific again to the back-to-back dot ball and is gone. Is a very good sound now. The got it is a wicket keeper. Is no mistake. Now the third down from the 72 for the 2 wicket. Sorry, 3 wicket now. This 2 back-to-back. Just 2 balls to go. 2 गेंद बाकी है अभी 3 विकेट होने के बाद 72 रन अच्छी शुरुआत यहाँ पर दोनों के बीच 66 रन की पहले विकेट की साझेदारी यहाँ पर रोहन और शिवानंद के बीच हुई थी और इस टूर्नामेंट का पहला हाईएस्ट पार्टनरशिप यहाँ पर जारी है और दूसरा highest score भी वही है 72. And in the air a chance to cut is the field, a very good chase on the 3 field. Now the miss, the catch and the field batsman coupling the 2 players in the same side. So what happened is the waiting the signal of score like umpire and asking the third umpire for the run out. As a really good throw given him. And wicket keeper doing the very good, and the bowler was superbly walk in misunderstanding for the players. Now and please check the run out, please third umpire. The first run is completed, second one is a mistake, and umpire the wicket keeper, and the throw is a given ball in the hand, one hand ball, another one is a wicket is a put, not test the ball, and very difficult to decide. Hanka deadly Panthers registered Hangel der banner hridayapurvak jawanu swagat sangta sachi the line is both are outside the line for the crease. Hasin jaw kamun sangunu nimgun geta sachi. S is out. Gokul is out. S. The one more get fall on from this number 4 depart from the side. 72 is the bad number 4 the batter and the 3 wicket gone for this same number. Dairy diunu sakar kelal dasala Sri Mahamaya traders aja Sudarshan Bhatt Hani amgelo tanga sachi hanka deadly Panthers registered hangel der banner hridayapurvak jawanu swagat sangta sachi. Just 1 ball remaining in this first innings of the match. This is the last over going on. Now the number 4 has been departed and 72 for 4 wicket. It's a good start for the batter. Then excellent from this weekend sports club playing on a terrific game at the moment. Please, John is a new man coming in that and the last time, and I think is the matter. Nasim Naik coming into the middle. And the final ball. This is a very good score. I know the last time in this over, Ramnath Bhatt. And his misspelling, missed the big wicket keeper. And good running for the non-striker given. And is a trouble again, the second run. As is gone, just 1 run added, 75. Now the in reply, 76 to win umpire. Okay, end of the first innings. Another complaints and for quick wicket going for this misunderstanding. The run out for and wonderful starting by Shivan and Rohan Naik is playing in the wonderful start in the 66 partnership. But both are playing in the massive sixes as well, and the score is a 75 in reply, 76 to win from just 36 ball in need to win.
Now I request Gopinath to continue the next innings of Hindi. तशीची आमका ट्रॉफी दिवन सहकार केला दिसला सुपर सप्लायर सांगई डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हंगेल तर्फेन हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगू इच्छिता तशीची ट्रॉफी दिलेल दिसला आमकां अनेक स्पॉन्सर सेव्ह लाईफ चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या अर्जुन भंडारकर हंकई डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हंगेल तर्फेन हृदयपूर्वक जावनू धन्यवाद सांगू इच्छिता आमगेलो तहसील दिसला हनुमंतಣ್ಣ तशीची महामाय ट्रेडर्साच्या सुदर्शन भट हांका मोमेंटो दिवन स्वागत कोरक म्हणून सांगून अक्षय तशीची अतुल हांका वेदिकेर येवन मोमेंट दिवक म्हणून सांगून घेता धन्यवाद श्रीमान सुनील और जहाँ तक सवाल है इस वक्त टारगेट तो स्टुपेंडस टास्क इन फ्रंट ऑफ वीरांजना क्रिकेटर्स कापू which set by Weekend Sports Club. Fantastic batting performance given by the batsmen of Weekend Sports Club. Shivanand and Rohan Naik played fantastically, and because of that they posted a huge total in front of Viranjana Cricketers Kapoor, 76. They have to score for victory in remaining in the stipulated 6 overs. तो इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए और नया ओवर उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होते हुए दोनों आरंभी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद विनायक शनाय और अश्विन भी कामत प्रदीप नायक का गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार विनायक शनाय सामना करते हुए प्रदीप नायक का और इम्पैक्ट खिलाड़ी इस वक्त शामिल कर लिया गया है। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का प्रदीप नायक का गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं। द फर्स्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, इस बार टॉप एज एंड टेकन बिहाइंड द स्टंप्स, फर्स्ट बॉल गोल्डन डक डिसमिसल फॉर द बैट्समैन।
बल्लेबाज विनायक शनाय गेंद को उछालना चाहते थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए, और यहाँ पर देखिए गेंद टॉप एज पर टकराए और पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है. कॉट बिहाइंड द विकेट. विनायक now departs and the very first delivery Viranjana cricketers Kapu lose their first wicket. It's not for one in the first over. और जहाँ तक 76 रनों के लक्ष्य तक, just talking about the target of 76 runs in 6 overs which set by Wicket Sports Club. Viranjana cricketers Kapu have to start. Nikhil, Canara Bank, They have to start Town Bank, Hundi explosively Gautam if they have to reach the target of 76 runs in 6 overs. Hangyo Ice Cream, और निश्चित रूप से बाजों की आवाज, बैंड बाजों की आवाज इस वक्त मैदान पर सुनाई देती हुई भव्य स्टेज के सामने बैठे हुए Abaran Jewelers, Sri Ram, कुछ लोग इस वक्त बैंड बाजा जो कि बजाते हुए और इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट की शोभा को और बढ़ाते हुए, और इस बीच गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट. प्रदीप पहली गेंद पर विकेट प्राप्त कर चुके हैं और अजय कामत का आगमन इस वक्त होता है नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद फुल टॉस ड्राइव कर दिया इस वक्त लॉन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. एक रन एक विकेट के नुकसान पर विरांजना क्रिकेटर्स कापू CA Jagannath Kamath, Krishnanand Dubai, absolutely need a Mahamaya flourishing Distributors, start if they have to MS and with Co, the target of 76 in Durga 6 overs. और Laboratories, जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी तंदूर आगे बढ़ाते हुए ये Restaurant, गेंद इस बार गेंद को छोड़ दिया, थोड़ी सी उछाल लेती हुई स्टंप से बाहर की ओर निकलते चेतन हुए, कामत, और रन महेश इस कामत, बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. आके स्कोर कुरवा, इस वक्त रुक चुका है. एक SVK, रन बिना किसी कामत नुकसान के कैटरिंग, वॉलंटियर्स है जो कि सूदमामू, डिडली पैंथर्स के इस वक्त सुरेश मैदान वी पर कामत, नजर अली, आते हुए मॉनिटर स्क्रीन हरीश पर. कामत, प्रतिज्ञा और कैटरर्स, इस बीच गेंदबाज प्रदीप गुद्देना, नायक 3 बेहतर गेंदें सपने जयलक्ष्मी उडुपी, की चौथी गेंद लेकर तैयार. कामत, Ganesh Kamath, Again lofted. This time I think it's got the distance. And it's crossed. It's went over the roof of a commentator box stand. Fantastic struck came from the bat of the right-handed batsman. Bharat, Just have a look at this in the replay. Just stand and deliver. Good company. The ball pitched on the roof of our Bharat commentator Kamath, box stand. तो ऐसे Century ही चंद Builders, स्ट्रोक्स की इस वक्त Anaga जरूरत Motors, है. Nandan यहाँ Anna, पर वीरांजना क्रिकेटर्स कापू के बल्लेबाजों को अगर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर होना Gopal है तो, Shetty, Naga Brahma, और बेहतर स्ट्रोक भारत इस वक्त BD Works, लगता हुआ यहाँ पर SL अश्विन Sheth, नबी कामत के प्रकाश बल्ले BD से. Works, इस बीच अजय बालिगा, प्रदीप नायक का प्रभु, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए CS दाहिने हाथों चेतन पर नायक, विकेट इस वक्त मनोहर यार फुल रेडियो टॉस हाउस, ऑन साइड पर गेंद को उछालना एल्को, चाहा, पैरों पर टकराई लेकिन RR भाई एल्को, शायद उनके हाथों पर टकराई थी गेंद, CA सुब्रमण्य स्टंप से कामत, कुछ बाहर की ओर निकलते हुए, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. द स्कोर स्टेज एट 7 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट. और जहां तक रॉयल सवाल है ब्लूम, बचे हुए गेंदों का, वाइको, तो एक लोहित गेंद बजाल, अभी भी बाकी इस प्रोफेशनल ओवर में. करियर्स, गणेश मराठा, वैष्णवी ज्वेलर्स, तो नो बॉल का अरुणा इशारा. मसाला, मन्नेल अन्नप्पा नायक, SS नायक, Gordons, गुरदत्त भागवत, कंदेल वसंत कामत, Umpire, Studio now Excel, the decision Pantheran came. Kiri, No ball is the call, Vasudev and 1 Kamath run Kulu, added to the total. Ravi Shenoy, 8 on the board, Madhukar losing 1 Nayak, wicket in the open Anil number first Kiri, in progress. और प्रसाद कुमार, गेंदबाज प्रदीप नायक अपनी शिवगंगा, ओर की Milk Parlour, गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Enjoy Drinks, विनायक इस भाई, वक्त गेंदबाजी विशाल करते लोबो, हुए ये गेंद उल्लास इस बार सिंह, उछाला गेंद तो स्ट्रेट सुविधा डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर 4 रनों के लिए. In fact it's a 6. SCDCC Bank, It's gone all the way in fact. And Suvarna that is sir, an absolutely perfect strike from the Deepak bat Bhandakar, of Ganesh Ashwin Baliga, B. Kamath. Ravindra और Malia, replay पर Padiyar देखिए, Imam, just stand and delivered. High Spirit And State, hit that one almost in a flatter version Hotel for a Village maximum. Restaurant, Yes, सीधे Chaitrish, डेडली पैंथर्स के फ्लैक्स पर मंजूश्री टकराते हुए, टेक्सटाइल्स, और इस छक्के के न्यू साथ स्कोर संदीप, बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 on the board for losing 1 wicket in the open number second in progress. और अश्विन कामत ये जानते हैं इस वक्त चौके और छक्के ही उनकी टीम को इस वक्त लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं. और इस बीच काफी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज तैयार. कामत के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में अंतिम बार. और अश्विन कामत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, बेहतर गेंद खोल पर टिप्पा करते हुए नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली. और बेहतर शुरुआत विरांजना क्रिकेटर्स इस वक्त कर चुका. 14 रन तो जोड़ चुका पहले ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन लक्ष्य अभी भी काफी लंबा. 62 रन और चाहिए बचे हुए 30 गेंदों में. 30 balls remaining, 62 runs more now they have to score for victory. Still a difficult task in front of the batsmen of Viranjana cricketers Kapu. और इस वक्त देखते हैं इन 62 रनों को बनाने के लिए विरांजना क्रिकेटर्स कापू के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाजी में. और दर्शक मैदान पर काफी मात्रा में मौजूद इस वक्त मैदान पर मैच का मुआयना करते हुए, और बेद्रा मीडिया के कैमरा इस वक्त
सीमा रेखा पर गुजरते हुए। और निश्चित रूप से एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। टेक्नीशियन कैमरामैन जनाब इरफान के सारथ्य में एक बेहतरीन कार्यभार यहाँ पर अदा करते हुए। और जहाँ तक वक्त का सवाल है तो वक्त इस वक्त बज चुके हैं रात के 8:44। और दिन धीरे धीरे देर रात की ओर बढ़ता हुआ नया ओवर प्रारंभ होता हुआ। दीपक कामत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अजय कामत सामना करने के लिए तैयार। 62 टू गेट इन रिमेनिंग 30 डिलीवरीज। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार लॉफ्टेड एंड दिस टाइम आई थिंक इट कुड बी टेकन जस्ट वेट एंड सी इट टेकन इनसाइड डिफेंस। फुल टॉस गेंद, धीमी गति की गेंद थी, गेंद को उछाला था जरूर लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद लगभग फुल टॉस के तौर पर आए थे। टॉप एज पर गेंद टकराई और डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपका गया। बाखूबी एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। अजय कामत डिपार्ट्स एंड सेकंड विकेट लॉस फॉर Viranjana cricketers cup. They are looking in trouble now. In fact, it's 14 for the loss of 2 wicket. तो इस वक्त रिव्यू लिया गया है तो यहाँ पर अंपायर ने कहा है कि ये नो बॉल है या नहीं, ये चेक करने के लिए तीसरे अंपायर से इस वक्त कहा है। It's a no ball and the batsman survived in this delivery. और बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं और हालांकि गेंद को डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा लपक लिया गया था लेकिन नो बॉल होने की वजह से गेंद लगभग ऐसा कहना पड़ेगा छाती के ऊंचाई पर आई थी, अबाउट द चेस्ट लेवल। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद फ्री हिट गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा चूंकि नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जहां तक सवाल है इस वक्त ओवर का तो दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी वीरांजना क्रिकेटर्स कापू के बल्लेबाजों को। ये गेंद दिस इज एन एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी क्रिकेट प्लेड बाय द बैट्समैन। गेंद को बल्ले के जरिए रोकने के बजाय पैर से गेंद को रोका और यहाँ पर देखने वाली बात यह है and this is an absolutely plumb in front and a right decision given by the umpire, no strokes offered। और इस अजीब और गरीब ढंग से यहाँ पर यह विकेट गिर चुका है जय कामत का और दूसरा विकेट वीरांजना क्रिकेटर्स कापू इस वक्त खो चुका है। सेकंड विकेट लॉस फॉर देम, फनी डिसमिसल फॉर द बैट्समैन अजय कामत एंड सेकंड विकेट लॉस। इट्स 16 for 2। So new batsman is now comes out to the middle और गेंदबाज इस वक्त दीपक कामत इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन अब तक इस ओवर में वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट टर्न की दिशा में, रन के लिए आगे दौड़ पड़े लेकिन एंड मौके पर अपने कदमों को इस पर खींचते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक गेंद व्यर्थ और एक गेंद के साथ स्कोर अब रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 16 for the loss of 2 विकेट। रनों की सख्त दरकार इस वक्त वीरांजना क्रिकेटर्स कापू के बल्लेबाजों को और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 for the loss of 2 विकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर इन द नेम ऑफ पैंथर्स सुपर लीग 2025 which is proudly organized by Deadly Panthers season 4। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइट का इशारा अंपायर का और वाइट के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर जबकि दूसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लंगोल पर लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के नीचे आते हुए और गेंद को लपकने में सफल सीमा रेखा के अंदर। स्ट्रोक इस वक्त दमदार था लेकिन इतना दमदार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और यहां पर काफी ऊंचा गेंद को उछाला था और आखिरकार लंगोन पर इस कैच को बाखूबी लपका गया फील्डर द्वारा।
एक और विकेट गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ Viranjana cricketers Kapu. Now they are looking deep in trouble. In fact, it's 18 for 3. Still a ball left. 25. In fact, it's 25 balls left in overall calculation in the innings. 58 runs more. Now they have to score for victory. One ball left in this over. And we are just waiting for the number 5 batsman of Viranjana cricketers. निश्चित रूप से अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही मैजिकल बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वीरांजना क्रिकेटर्स कापू को इस मैच में वापस ला सकती है। और इस ओवर में अंतिम बार रस अपना करते हुए इस वक्त नए बल्लेबाज इस वक्त गणेश कामत का आगमन हो चुका है और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार रहा। Bowled off his legs, perfect off cutter from the bowler and he just got rid of the batsman. Much slower pace और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए, अंतिम अक्षर में गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा था और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, धीमी लेग कटर गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, चूंकि he just wanted to play that one with the absolutely wrong line and he just paid the penalty for that. One more wicket fallen, 4th wicket down. 2 overs completed. The problems are now more building up for the batsmen of Viranjana cricketers Kapu. It's 18 for 4 after completion of 2 overs. So Gokul Gadiar, the bowler, is now starts a fresh proceedings. A new man comes out to the middle is Ramnath Bhatt for Viranjana cricketers Kapu. 58 to get from remaining 24 deliveries. The required run rate exactly 14.5 runs per over now for them. और तीसरा ओवर उनके पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ और कार्तिक नायक का इस वक्त सामना करते हुए गोकुल गडियार की गेंदों का पहली गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद उनके लगभग पीठ पर टकराई और जब तक शॉट फाइन लेग पर गेंद इस वक्त पहुंची, लेग बाय के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 for the loss of 4 wickets at the start of the 3rd over. In fact, still they have a long way to go. In fact, 57 more runs now they have to score for victory in remaining 23 deliveries. Full toss, lofted, and this time fell in the wicket area, deep mid wicket. Just got a single for that stroke. Deadly Panthers registered अंतिम में हृदयपूर्वक जाओ इस फुल टॉस गेंद को उछाला था डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए. Scoreboard moving up to 20 now for the loss of 4 wicket. Slower progressing here for Viranjana cricketers Kapu. और इस बीच गोकुल गडियार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा. इस बार ऑन साइड पर गेंद को डिफ्लेक्ट किया, खूबसूरती के साथ गेंद का पीछा करते हैं फील्डर, स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूर्ण करने में सफल. निश्चित रूप से गेंदबाज 1 या 2 रन से ज्यादा चिंतित इस वक्त नहीं होंगे क्योंकि रन से काफी बनाने हैं, 54 रन और बनाने हैं 21 गेंदों पर. 54 स्टिल नीडेड इन रिमेनिंग 21 डिलीवरीज. और इस बीच गेंदबाज गोकुल गडियार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. कार्तिक नायक इस वक्त सामना करते हुए lofted, square of the wicket and into the gap as well. और गेंद अपनी रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड और डीप कवर पॉइंट पर रहा, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था इस वक्त खूबसूरती के साथ और 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल. गोकुल गडियार अगली गेंद फुल टॉस, इस बार गेंद को खेल दिया बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में और फिर से एक बार 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे. इनफैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड. 2 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल. 26 for 4 now. Every ball pressure is now building up on the sides of the batsmen of Viranjana cricketers Kapu. Still have a long way to go. Exactly 50 runs required in remaining 19 deliveries. और गोकुल गडियार अंतिम बार इस ओवर में पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर. जस्ट अ सिंगल ही गॉट. Good over came to none from Gokul Gadiar. 8 runs came from this over. 3 gone after way mark after 3 overs. Still struggling time continuing here for the batsmen of Viranjana cricketers Kapu. 26 for 4, 49 to get in remaining 18 balls with a required run rate of 16.33 runs per over.
और देखते हैं यहाँ पर 3 ओवर में वीरांजना क्रिकेटर्स कापू के बल्लेबाज इस मुश्किल से लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो गया खुदे काल सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शैलेश को। आइए शैलेश, धन्यवाद, थैंक यू। ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗೋಪಿ ಸರ್, ಮೊದಲ ಎಸೆತ ದೀಪಕ ಮತ್ರವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೋಕನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ಹಿಯರ್. Fabulous bowling by Deepak Ahmed here. A very good Yorker delivery. ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪಾಗಿತ್ತು ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 4ನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಬಂದಾಗಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 76ರ ಸವಾಲಿದೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. Deepak Ahmed, one of the best bowler in this match. 4 wickets with 4 runs. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಪವನ್. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆದಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹದಿನಾರರ ಮುಂದೆ 48 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ರವರ ಎಸೆತ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಮನಾಥ್ ಭಟ್ ರವರ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್. 5 wicket haul for Deepak Ahmed here. Wonderful bowling by Deepak Ahmed. Wonderful. ರಾಮನಾಥ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಮನಾಥ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟಗಾರ ಸಾರ್ಥಕ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಥಲಾಂಗ್. 5ನೇ ಎಸೆತ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ಪವನ್ ಥಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಶಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಜನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮನಿಶಾನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಬೇಕು ದೀಪಕ್ ಟು ಪವನ್. ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅಹಮದ್ ರವರಿಗೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್.
ಬೈ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 21 ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್. ಸಾರ್ಥಕ್ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ 31 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 45 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಹುಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್. ಕಳೆದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ದಂಡನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪವನ್ ರವರು ಗೌತಮ್ ರವರಿಗೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಗೌತಮ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖೇನ ಪವನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಗೌತಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವನ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ದಂಡುಗಾರ ಗೌತಮ್. ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಗೌತಮ್, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕೊಂಚ 70-30ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌತಮ್ ಟು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಕಾಮತ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಡಬಲ್ ಓಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌತಮ್ ಟು ಗೌತಮ್ ಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಗೌತಮ್ ರವರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಇವರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಹಸಿದ ಹುಲಿ. ಗೌತಮ್ ಎಂಬುದು ಹಸಿದ ಹುಲಿ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್. ಗೌತಮ್ ಕಿನಿರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್. 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು ಗೌತಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಒಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಐದನೇ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಎಸೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆಗೆ 33 ರನ್ ಜಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. 9 ಉತ್ತರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 90% ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. 10ರಷ್ಟು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್. ಆದೇಶ್ ಟು ಪ್ರಸಾದ್. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಆದೇಶ್ ಟು ಪ್ರಸಾದ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ
ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಛೇದಾ ಇದೆ. ದಸಿಚಿ ಎಂಗೆಲು 2 ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭಕ್ತಮ ಮಸಾಚಿ ಹಂಕ ಎರಡನೆಯ ಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. And congratulations to Weekend Sports Club. Another time. ನಲವತ್ತೊಂದು ರನ್ನಿಗೆ ಜಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡ. ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಇನ್ ದ PSL 2025 ಸೀಸನ್ 4. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 2ರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್ ರವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್ ರವರದ್ದು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तशीची 9:15 नाका करेक्ट समजावणू वीर वेंकटेश वॉरियर्स टीमाचे ओनर्स तशीची प्लेयर्स आणि वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब या टीमाच्या प्लेयर्स. Yes, the final is played between Veera Venkatesh Warriors versus Weekend Sports Club. Exact 9:15. We are waiting for the grand finale. दोन्ही टीमांनी लाइन अप कोण घेऊ कमंडी now it's time for a short break and further procedures. For the further proceedings, the presentation will be done by the one of the Coastal Karnataka's vice gem, Satish Salyan sir. And this is Silas signing off for this Panthers Super League 2025. And thanks for Venkatesh Pai sir for giving me the opportunity to commentary in this biggest stage. Thank you. Yes, now get ready for the biggest final which is coming up next between Veera Venkatesh Warriors versus Weekend Sports Club. Nice musical band is played by the musicians there in the biggest stage which is right on the ground. Nice visuals by Bedra Media. The final telecast is coming up next. And it's done by the vision of Coastal Karnataka, Underarm Cricket and Overarm Cricket. One of the vision, it is Bedra Media. Thank you, Bedra Media, for giving this much big opportunity to me for in this big stage. Thank you all.
दोन्ही टीमाच्या प्लेयर्स कॅप्टन तशीच ओनर्स पिच्च्या लगी लाईन अप जावका म्हणून निघून येतात वेणू वेंकटेश वॉरियर्स तशीच वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब दोन टीमाच्या प्लेयर्स ओनर्स कॅप्टन तशीच ಬಗ್ಗೆ पिच्च्या लगी लाईन अप जावका म्हणून निघून येतात all the players of Wicket Sports Club come to the lineup. I request all the players of Weekend Sports Club, please come near the pitch for the lineup. Band Untale Tasiji Tasiji amgelo toanga amgele एक senior player and एनस हन्नी आणि मुखारच्या संदर्शन कोरका म्हणून सांगून निमगून घेता एक दोन उत्तर उल्लोक म्हणून सांगून एंड निमगून घेता फर्स्ट पूर जनಕ್ಕೆ आमगे प्लेयर्स साक आणि आमगे ऑर्गनायझर साक मस्त थँक्स म्हणता सा इतला एक ऑर्गनाइज केला या टूर्नामेंट एक ब्युटिफुली कसं म्हणारी कसं चर्च याच्यावर पूर्ण एक जलल टूर्नामेंट आहे तशीची लायक रीती अंपायरिंग जलारी एक हॉनेस्टली असाची पुरे तशीची आम्ही 4th इयर आम्ही फायनल पावता असाची वीर वेंकटेश वॉरियर्स 4 सीझन अंतू 4th सीझन फायनल पावताचे आणि मुखार रिझल्ट कसं म्हणून म्हाका पळका मागीर तशी अनंतना तुमगेला टीम एफर्ट्स म्हणून म्हाका एक उत्तर सांगू का तुम्ही आमगेला टीमाच्या पुऱ्या स्टार्ट आमगेला विघ्नेश शेणे आणि टीमान केलेला सीनियर प्लेयर अंतोस तशीची एक्सपिरियन्स प्लेयर ते गंगोळी नागेश आसा मागीर केलो यंगस्टर्स आसाची पूर जनान कंबायन करून हे आम्ही फायनल पावले ಒಟ್ಟು टोटली कसं म्हणारी इफ यू वांट टू बीट द वीर वेंकटेश वॉरियर्स थिंक लाइक वीर वेंकटेश वॉरियर्स तशी आमगेलो वीकेंड स्पोर्ट्स क्लबाच्या अश्विन अण्णा हांगासरची हांगेलेगी
हानी एक दोन लोक म्हणून सांगून गेला निमून घेता हॅलो हॅलो आम्ही एक टीम केलेले टाइम मारी तुमगेली टीमान तू फुल बॉलर्स मात्र असचे तेजावन तुमकां ಸ್ವಲ್ಪ बॅटिंगाक प्रॉब्लम आसता त्याच्या कडेन मोन सांगून ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें बट इतले कोर न्हू आमी हांगा थंय पावली आनी फायनल्स खेळचे मटान तू हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटस तशी टीम तुमच्या टीमाच्या एक स्ट्रॅटर्जी बघे कसं सांगू इच्छिता तुम्ही सगळी इंडिविजुअल तंतनी खेळणू आता थँक्यू दोन्ही टीमाच्या ओनर्सांक तशी आता दोन्ही टीमचा कॅप्टनानं एदूर येवका म्हणून निमून घेतात या दोन्ही कॅप्टन येत या उलोचा असतो तुमगे तशीची आम गेलो तो वॉरियर्साच्या कॅप्टन विघ्नेश शणे हन्ने आसाची हन्ने एक तुमगे टीमा विषय एक दोन तर लोक म्हणून निमून घेता आमगेले वीर वेंकटेश टीम चारी पटी फायनल आयला तां 3 पटी हांव खेळ्ळा 1 वर्स खेळू जायनी बट ह्या पटी टीम एफर्ट लायक आसा आमगेले येदरा टीम बॅलन्स आसा आमगेलो टू आसा एकूच म्हणून येतो लास्ट क्रिकेट विन तुम्ही कसं सांगता हिशोबावताची काय ना इतले ते आम्ही टीम एफर्ट राहील फायनला आणि एक मॅचेस त्यावेळी एफर्ट घालून ट्रॉफी मार पडत तिथल्याची टीम कॅप्टनचा काही ಸಕಡಾನೆ ಊಟಾಡ್ರಬೋಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಆಗಲಿ जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बोलो भारत माता की तशीची आमगेलो टू वी बाजाराच्या ओनर तुम्ही तान्यासाची
हानी टॉसा प्रक्रिया कोरका म्हणून सांगून निमून घेता तशीची दोन टीमा कॅप्टन्स त्यांनी जलतीतले बग्गी मुखार येवका तशीची फायनल मॅच अंतू वीर वेंकटेश वॉरियर्स वर्सेस वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब ह्या मॅच अंतू वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब टॉस विन जावन बॉलिंग येतील आसा मैच प्रोग्राम जो प्लेयर्स हैंड शेक जावन अत मैच स्वल्प टाइम हारी स्टार्ट जाता दोन्ही टीम्साच्या प्लेयर्स जल्दीतले वग्गी मैच सूर कोरका म्हणून निघून घेता सर So welcome back once again for the mega final of the prestigious Panthers Super League 2025, which is proudly presented by Deadly Panthers. And after that, the final toss, we are into the mega final, and the two deserved teams are in the mega final. And the consecutive fourth time, Veera Venkatesh once again in the 2025 edition 4, they are coming into the finals, and they have to take the challenge of Weekend Sports Club, and wait and see
how well these two teams will go into battle here for the title, which is Panther, the organizer, myself, Satish Salian, and Mr. Gopi, and special thanks for their opportunity being the part of this wonderful cricket tournament. And we are in the final time here in the big match. And out of 12 teams, at last 2 teams are qualified for the mega final. Just like I mentioned, 2 deserved teams are in the final. It's not an easy journey for both the teams to come into the finals. They really played an excellent game of cricket, and they deserve in the place of a mega final. So for the Mega final here, once again the festival atmosphere in this URWA ground, and SVS band set once again. They are making this the condition, the atmosphere, the electrifying one for this mega final. I request the fielding team, kind request you to please enter the ground. Time is exactly 9:30 in the night. तशीची आम्ही आता आमगेल्या स्पॉन्सर्सांक धन्यवाद करचे समय विजेंद्र भट वी बाजार योगेश अण्णा सद्गुरु एंटरप्राइजेस यज्ञावंत पै रवि अण्णा महालक्ष्मी ज्वेलर्स संजय अण्णा सिद्धार्थ डिजिटल्स मछली विक्की अण्णा भद्रा मंजमामू सावकार किरण पै सुधीर पै गटियार इंपैक्स कार्तिक अर्जुन भंडारकर विजय मसाला संदेश शनाई उपेंद्र ट्रेडिंग कंपनी होटल तिम्मप्पा मालसी पाइलैंड्स विवेक प्रभु पेट चॉइस उडुपी बालाजी एजेंसीज निखिल कैनरा बैंक टाउन बैंक कुंटी प्रभा मैम गौतम अन्ना पंचमाल प्लास्टिक्स हैंग्यो आइसक्रीम्स आइडियल आइसक्रीम्स गिरिमंजास वेदव्यास कामत आभरण ज्वेलर्स श्रीराम अमुंजे प्रसाद भट्ट Mangalore Cycle Company Sudhindra Supermarket V2 Anantanna आचार मामानी देवण भट मामा इल्यांची तशीची आता आमगेलो टू देवस्थानाच्या आमगेल मोगाच्या आचार माम जावन आशिल्ल्या काशीनाथ पंडित श्री काशीनाथ आचार मामासाची आनी तांगेलो टू देवण भट मामासाची हंका डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हंगेल तर पेन हृदयपूर्वक जावन स्वागत सांगता सूरज कंस्ट्रक्शन्स तारण्णा सुजित बालिगा कार्तिक अन्ना अरविंद कामत मुटकूर CA जगन्नाथ कामत कृष्णानंद दुबई महामाया डिस्ट्रीब्यूटर्स MS Pai and Co दुर्गा लैबोरेटरीज तंदूर रेस्टोरेंट GK भट्ट चेतन कामत महेश कामत राघवेंद्र कुडवा सुरेश V कामत कामत कैटरर्स श्रीनिवास कामत अरुण कैटरर्स हरीश कामत प्रतिज्ञा कैटरर्स गुद्यन्ना जयलक्ष्मी उडुपी
ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಭರತಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಸುನಿಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನಗಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಂದನನ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಭಾರತ್ ಬಿಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಜಯ್ ಬಾಳಿಗ HR ಪ್ರಭು CS ಚೇತನ್ ನಾಯಕ್ ಮನೋಹರ್ ರೇಡಿಯೋ ಹೌಸ್ ಎಲ್ ಕೋಡ್ RR ಪೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ CA ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ Royal Groom, Paiko, Lohit Bajal, Professional Couriers, Ganesh Maratha, Vaishnavi Oilers, Arun Masala, Mannel Annapanayak, Tashichi, Amgelotto Kellal Dasala, ek team Gajakesari Battler Sulya, Ajay, Captain Amgelota Sachi, Hanni, Stage Ariono, Momento, Collector Common Sangono Nimungeta, Yeah Momento. आमगेल्या देवस्थानाच्या आचार्य जावन आशिल्ले आचार्य माम पंडित श्री काशीनाथ आचार्य मामांना ह्या मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून निमगून घेता पांडुरंग किणी वासुदेव कामत खुळूर रवीश शेणॉय मधुकर नायक अनिल किणी प्रसाद कुमार शिवगंगा मिल्क पार्लर्स एन्जॉय ड्रिंक्स विनायक पै विशाल लोबो उल्लास हेगडे सुविता इन्वेस्टर्स विघ्नेश शनाय गरोडी स्टील्स SCDCC बैंक गोपीनाथ सर सुवर्णा सर Well, welcome back. Thank you very much everyone, and we are in the mega final. The waiting is over, and at last we are into this big final. The battle here for the title. Manjushri Textiles, PSL 2025 Panthers Premier League 2025. The Deadly Panthers organized this edition 4, and wait and see out of these two teams, Veera Venkatesh and team Weekend Sports Club will go into the battle for the victory here. And here comes the first ball, winning the toss, selected the ball first. Here comes the final delivery, first delivery of the final. And first ball itself, the batter is just in a defensive frame of mind because of some extra bounce there from Pradeep Nayak. The batter had to go back and just played it back to bowler, not for run. And this is a big final, isn't it? Playing league matches, playing in the Super 6, playing in the playoff is a different feelings, but coming into the final and playing a final, it's always a great feeling. This time he lofted. Lofted looks like it's going to get the distance. No, it's going to be a dream start. Pradeep Nayak has got a wicket here. This is absolutely the start what Weekend Sports Club wanted here, and he's just hoisted it over. No power whatsoever. Pays the penalty, and long on fielder Gautam Pai making no mistake at all. He's just celebrating that wicket. Why not? They needed that huge wicket of Hari Prasad. And Gopi, welcome to the mega final. Just like talking about this MIG final, is always a dream for each and every team out of 12 teams. They wanted to get into the final. They have wanted to touch that beautiful trophy, which is we are witnessed yesterday. This is absolutely one of the most beautiful trophy we are witnessed yesterday. And this is what the dream for the 12 teams. But at last the two teams came into the final. And two much deserved teams which came into the big final. And the dream start given by the team Pradeep Nayak for Weekend Sports Club. After winning the toss, they got a huge wicket of opening batter. So is considered to be a very, very destructive opening batter. Hari Prasad is back in the pavilion. And now it's third delivery of the over number first. And here comes the next ball over the wicket. Short pitch delivery outside the line of off stump. Again, Nagesh Pai, the new batter, the fresh leg. He couldn't manage to read that slope short pitch delivery, which is just directed in the outside the line of off stump, and he managed to complete the single in the form of bye. So, first run for the team Veera Venkatesh. And most of the time I'm seeing that Veera Venkatesh not really getting the good start. And here also in the final, they lost their first wicket too early. And now it's very interesting to see that it's going to be a wide. Absolutely right. That's the bouncer going over the head. One from the over as well. The wide has been given so that 1 run added to total. The 2 for the loss of 1 wicket in the over number. The first is in progress. What an outstanding cricket tournament just we are talking about.
the 2-day night of cricket tournament. Yesterday is a big day. Till the 12:30, the late night matches progressed to 16 matches completed. The full toss delivery. Just wanted to go for the big shot. Straight to the answer fielder. Oh my goodness, they're going for the blind run, isn't it? Juicy full toss, but Deepak Kamath couldn't manage to capitalize that delivery. A very lucky escape here for Pradeep Naik because he is bowling in the power play. Little margin for error, and he just pays the penalty for that. Nicely driven right from the middle of the bat. Speed sound you can see. We can heard when the ball has got a contact with the bat of Deepak Kamath, even though he will going to get the single for that. But that will give a lot of confidence for the batter. And 3 for 1 in the over number first is in progress. Final time in this over. Right, over they get driven that one. They're going for the single. Chance of run out. Directed. But only the bails are blinking. But bails which is not dislodged. This is all happening in cricket sometime. Well. This is what you call the luck is favors the brave. Luck is favors the brave. Of course, they're going for the quick single. And the ball hits the stump. But bails which is not dislodged from the stump. So, Gopi, very good start, isn't it? Pradeep Naik once again... as always, for the weekend Super Club, they're given that good start of 4 runs, and more than anything else, Gopi, the wicket of Hariprasad, that's certainly a huge success for the team. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर प्रदीप नायक ने एक बेहतर शुरुआत दी है. सिर्फ 4 रन पहले उन्होंने प्रदान किया और पावर प्ले ओवर में खासकर 4 रन प्रदान करना, खासकर फाइनल मैच में, मेगा फाइनल मैच में, तो एक बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कहलाई गया. और यहाँ पर विकेट जो कि गिर चुका है उनके प्रमुख बल्लेबाज का, तो पहला विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा प्रदीप नायक जो गेंदबाज थे एक बेहतर शुरुआत दे चुके हैं. प्रदीप नायक जो कि गेंदबाज हैं एक बेहतर शुरुआत इस वक्त गेंदबाजी में दे चुके हैं जिसकी उम्मीद उनके टीम को थी. Exactly, Gopi. After that very good first over, we are watching Deepak Kamath, one who picked up 6 wickets in the previous match with the hat-trick, and this is the one is looking for that final. How we will going to dominate the batters of their opposition. Right arm over the wicket. Full toss. Lifted and fielder taken. A wonderful catch. What a catch. Again the Gautam Pai. He is a busy customer in the deep. Second catch for him. This is absolutely prize wicket. Full toss delivery. Lofted at one. Lack of placement. And wonderful catch. Excellent catch taken by the fielder in the deep. And wicket number 2 is back in the pavilion of team Veera Venkatesh. So all in sudden we are seeing, watching here, absolutely shackling start here for the Veera Venkatesh. One of the most successful team in this Panthers Super League. After that, they are consecutive 4 times they are in the finals. And of course, last year they are a runner-up. And they doesn't want to become a runner-up here also. They wanted to become a champion. They'd have to come out from the trouble because they lost 2 wickets too early. And the new batter in his experienced campaigner, Anantesh Pai, along with his partner, have to rebuild the innings here for the team, Deepak Kamath. Again, full set one, nicely in the deep square leg region, but again, not more than a single. The fielder are in the deep in the square leg region, will go into cut it off, and ample time for the batter, Anantesh Pai, to complete his first run, and 1 run which is added to total 5 for 2, and over number second is in progress. Second and last over of the power play. Deepak Kamath has got outstanding tournament from the ball. Again, wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of that and properly. The intention of Deepak Kamath that just he wanted to go for the big shot. The very, very interesting contest. Deepak versus Deepak. This is the battle between 2 Deepak. Deepak to Deepak. Oh, this time lovely delivery, change of phase. The wicketkeeper is so confident, appealing for umpire for the stump out. Now umpire, goes upstairs for the third umpire. We're watching that wicketkeeper's confidence level. He is very confident. And let's wait and see what could be the decision from third umpire. And once again, Gopi, what we are talking about, the start what team Vic and Sports Club wanted after winning the toss, and both the opening bowlers are justifying the captain's decision.
एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर बेहतर शुरुआत गेंदबाज दे चुके हैं और विकेंड स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान ने जो उम्मीद की थी गेंदबाजी में, वो गेंदबाज अब तक बेहतर गेंदबाजी के रूप में दे चुके हैं। और यहाँ पर देखना यह है कि तृतीय अंपायर के लिए जो इस वक्त मांग की गई है स्टंप आउट के लिए, तो देखना यह है कि यहाँ पर जब विकेटें उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज का फुट क्रीज पर था। इस वक्त नॉट आउट इस वक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन इस बार बल्लेबाज जरूर बच चुके हैं। लेकिन सतीश, इस वक्त जहां तक वीर वेंकटेश का सवाल है, इस वक्त उन्हें साझेदारी यानी पार्टनरशिप यहां पर निभानी होगी। Exactly, Gopi. They needed some partnership at the same time, some acceleration of run rate. What we are talking about the partnership, but here is a Deepak Kamath has got a different idea as he targeting the midland off stump of the batter. Absolutely perfect Yorker and delivery. Just have a look at it in the replay. Well, what a delivery, what a delivery. Batter absolutely no clue whatsoever. Try to play against the line. Pays the penalty for that. And again, the wicket number 3. What an outstanding performance here from Deepak Kamath. Well, what we are talking about, the 6 wickets in the previous match. Now he already got 2 wickets. So new batter arrived to the middle, Srinivas Pai, the most experienced campaigner, and too early entry for him, and 5 for 3. Here comes right arm over the wicket. This time is very watchful, needed to be after losing 3 wickets. There, just like I mentioned about, even Gopi is mentioning about the partnership is so important. But one more good over which comes in, and after completion of over number 2, it's 6 for 3, and well, Gopi, we are just talking about that power play overs, and usually the batters are dominating with some big shot, but here is going to a different story, and the bowlers of Team Weekend Sports Club are really dominated, not in the form of economical over, but even in the form of 3 big wickets of their opposition. बिल्कुल सतीश, फर्स्ट 2 overs belongs to the bowlers of Weekend Sports Club और दोनों गेंदबाजों ने यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी की है। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 2 ओवर के समाप्ति के बाद तो वीर वेंकटेश वॉरियर्स इस वक्त एक शैकलिंग शुरुआत जिसे कहते हैं, इस वक्त लड़खड़ाती हुई शुरुआत यहाँ पर कर चुका, सिर्फ 6 रन जोड़ चुका, 3 विकेट खो चुका है, लेकिन न कम बैक करने का मौका यहाँ पर जरूर है। बचे हुए 4 ओवर में कम से कम 35 से 40 रन अगर बटोरते हैं, अगर उनके टीम की कुल रन संख्या को 50 के आसपास पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से इन हालातों में एक बेहतर स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो देखना है कि इस वक्त वीर वेंकटेश वॉरियर्स के बल्लेबाज बचे हुए 4 ओवर में जितने रन की हमने जिक्र की है, उतना रन यहाँ पर बना पाते हैं या नहीं, बचे हुए 8 विकेटों की मदद से। Exactly, Gopi. This is a 6 overs game. Still there opportunity for the VB cricketers to back in the game with the remaining 4 overs, because 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls, and wait and see how many runs they will going to score in that 4 overs. This time outside the stump, Anantesh just wanted to go for the cut shot. Little correction, Srinivas Pai just wanted to go for the cut shot, but not really able to get that middle of the bat, so no chance of any run. And the trouble, the problem which is continues here for Veera Venkatesh. It's 6 for 3. This time Gokul bowls a lovely delivery, absolutely perfect one in the negation, well within the reach of the batter. And Srinivas Pai once again just wanted to go for the square cut, and beaten by the flight and little movement of his feet as well. Here comes next delivery. They wanted to go for the switch it, and played it down to deep cow point region. The protection has been given in the deep, so that Srinivas had to settle for single. With that single scope, and moves on to 7 for 3. Of course, now he is the man. Anantesh is a key player now for the side of Veera Venkatesh. And here comes next delivery. Lovely delivery. The ball is capped low. And good news here for all the cricket lovers, because India quite hardly managed to get the victory here. Just 17 runs victory. Need to appreciate the effort of South Africans coming very close to the target. This time Anantesh lofted, and fielder won't get that one, but one bounce ball will go into travel. No, excellent work done by the fielder. This is just a presence of mind as well. You can see from that fielder, even though he is not able to get the catch, but he's just looking for the saving the boundary. This is what the commitment which is required from the fielders.
that will going to galvanize the level of confidence of the bowler. Such kind of commitments from the fielders. It's 9 for 3. Here comes next ball. Oh, beautiful Yorker and delivery. And the wickets which is blinking, but no problem whatsoever. One more great over which is comes to an end. And what we are seeing, Gopi, 3 overs completed, only 3 runs per over, and they lost 3 wickets. And this is what we are not expecting from Veera Venkatesh. And after they are coming into the final and the 4th edition, and consecutive 4th time they are coming into the final. I already mentioned they doesn't want to become a runner-up. And looking up the history in this particular tournament, they won 2 titles as a runner-up. 1 title, that is the edition 1, they become the champion. And again they are in the final. And again that is not the kind of performance we are expecting in the big final against team Weekend Sports Club. But all marks go to the Weekend Sports Club. Their bowler did a great job in first 3 overs. Mistake, sorry. Exactly, Satish. जैसा कि आपने फरमाया 2 बार रनर्स अप, एक बार विजेता टीम रही है इस वक्त वीरा वेंकटेश वॉरियर्स। और यहाँ पर विकेंड स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों ने पहले 3 ओवर में गेंदबाजी जिस तरीके से की है काबिल तारीफ है। सिर्फ 9 रन प्रदान करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेटों को उखाड़ने में सफल। और चौथा ओवर जो कि शुरू होता हुआ इस वक्त गौतम पाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और श्रीनिवास पाई गौतम पाई इस वक्त गेंदबाजी करते हैं, जो कि श्रीनिवास पाई इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन इस वक्त वीरा वेंकटेश वॉरियर्स को इस वक्त बटोरने होंगे। पहली गेंद इस बार गेंद को पुल किया है, लंगोन पर गेंद जाती है और गेंद सीधे पहुंच चुकी है लंगोन फील्डर के हाथों में। ऐसा कहना पड़ेगा, हिट दैट वन pretty hard but the placement was too wrong। और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंचे। और देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को उछाला था, शॉर्ट गेंद थी, लेकिन आखिरकार इस गेंद को सीमा रेखा को क्लियर करने में सफल। और लंगोन पर इस कैच को लपक लिया गया। 9 रन 4 विकेट। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका। श्रीनिवास पाई की पारी समाप्त। और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा वीरा वेंकटेश वॉरियर्स आर लुकिंग डीप इन ट्रबल। और जहां तक सवाल है इस वक्त नंबर 6 बल्लेबाज का, तो नंबर 6 बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ विघ्नेश शनय, जो कि नए बल्लेबाज एक और प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 4 विकेट गिर जाने के बाद इस वक्त दबाव साफ वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के ऊपर नजर आता है। और देखना है कि नए बल्लेबाज का जो आगमन हो चुका है विघ्नेश शनय, काफी इस वक्त बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। लंबे स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत वो यहाँ पर रखते हैं। और देखना यह है कि अपनी टीम को वो अनतेश पाई के साथ मिलकर किस मकाम तक ले जा पाते हैं। और इस बीच गौतम पाई गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। विघ्नेश शनय इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गौतम पाई की गेंदों का। और इस बीच ये गेंद इस बार विघ्नेश शनय के लिए गेंद को उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली। इन फैक्ट द बॉल रनिंग डाउन टू अ डीप मिड विकेट and the batsman got a single, and with that single one the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 4 wicket. Fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of विकेंड स्पोर्ट्स क्लब। और इस बीच रनों के लिए संघर्ष करते हुए बल्लेबाज वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के गौतम पाई अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस उछाला इस वक्त, शायद फील्डर पीछे तैनात है, नहीं गेंद के नीचे आ चुके हैं और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को उछाला था इस वक्त, लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से फील्डर ने कैच को लपका, काबिल तारीफ, जस्ट लीनिंग फॉर दैट एट द लास्ट मोमेंट, लॉफ्ट दैट वन। और स्ट्रोक पर नियंत्रण नहीं था, नॉट फुली कंट्रोल्ड स्ट्रोक, और लॉन्ग ऑफ पर यह कैच को फील्डर लपकने में सफल। तो एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। अनितेश पाई डिपार्ट्स, और ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर वीरा वेंकटेश वॉरियर्स। Exactly, Gopi. We are just expecting that these 2 batters will going to take this team from trouble. But the way that Anantesh has got out, I think really disappointed, and because he's just reaching for the wide delivery, isn't it? Of course, the ball is full toss, but he's played it on away from his body, and he just wanted to get the ball. He's not really tried to hit the ball, and that's the big problem. That's what happening, Gopi. The pressure, which is really asking the batsman to make a mistake, and the bowler definitely capitalizing that opportunity. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर गेंद तक पहुंचना चाहता और अपना विकेट दे चुके हैं। और इस बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद उछालना चाहा, क्विक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, और इस वक्त कॉन्फिडेंट नजर आते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त अपील सौंपी गई है, तो यहां पर देखिए उछाल लेते हुए गेंद, और जैसे विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची, दैट माइट बी इज सो टाइट। और यहां पर देखना यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं नहीं, तो
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स। और तृतीय अंपायर इस वक्त इसका परिशीलन करते हुए, और काफी नजदीकी मामला यहाँ पर कहा जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर तब विकेट कीपर ने विकेटें उखाड़े थे, तब बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला यानी बैट लैंड कर चुके थे या नहीं। दैट इज द मेन क्वेश्चन मार्क स्टैंड्स एट दिस सिचुएशन। And he's gone. The decision came from the third umpire. One more wicket fallen. And now they are looking at deep in trouble. और निश्चित रूप से सतीश एक बेहतरीन स्टंपिंग, absolutely brilliant stumping made by wicket keeper in a fraction of second. He just flicking the wickets very quickly. And that is an absolutely fantastic work made by wicket keeper behind the stumps. Well, Gopi, fantastic work because Rohan Naik behind the stump. Because this is not easy to collect because this is extra bounce. Already umpires given a wide for that because it's above the end level, and collecting the ball from the high level and getting the stumps in a fraction of second is absolutely fantastic. Just have a look at the replay, that is special. The very high collection from wicket keeper, and done absolutely quick work done by the wicket keeper, and disaster for the team of Veera Venkatesh. Exactly Satish, disaster continuing here. अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद उछाला, लंगोर पर एक और विकेट हो सकता है. One more wicket fallen. The problems are more building up for Veera Venkatesh Warriors. विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्ट्रोक उछाला था, करारा प्रहार, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत, लंगोन पर लपक लिया गया. Wickets are falling like a pack of cards for Veera Venkatesh Warriors, and with every dismissal they are looking deep in trouble. Now 6 wickets down. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक जरूर था, लेकिन प्लेसमेंट was absolutely wrong, and he just paid the penalty for that. 6 wicket down, 11 runs on the board. और निश्चित रूप से सतीश इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, the bowlers of Wicket Sports Club looking right on top. Well, Gopi, the wickets are tumbling like a house of cards. I am just pinching myself, which I am just dreaming or not. What really going on, Gopi? It's a competition between run and the wicket. 11-7. It's not. It never looks like going to be the cricket scoring board. This is what you're watching in the kabaddi scoreboard or volleyball scoreboard. 11-7. बिल्कुल सतीश, कबड्डी स्कोरबोर्ड और वॉलीबॉल स्कोरबोर्ड में आमतौर पर ऐसे आंकड़े दिखाए जाते हैं. तो यहाँ पर 11 रन 7 विकेट, 11 for 7. और देखते हैं यहाँ पर नए बल्लेबाज का जो कि आगमन इस वक्त हो चुका है, वो किस तरीके से इस वक्त उनकी पारी को संभालते हैं. तो गेंदबाज गौतम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. 2 विकेट अब तक इस ओवर में वो प्राप्त कर चुके हैं. अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार बैक फुट, विकेट कीपर चुके इस वक्त. एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी और शॉर्ट फॉल लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. Absolutely everything going against the batsmen of Veera Venkatesh Warriors now. और इस वक्त उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि बचे हुए 14 गेंदों को वो पूर्ण करें, बचे हुए 3 विकेटों की मदद से जितने भी रन्स बनाने चाहें वो बनाए इन बचे हुए 14 गेंदों में. ये गेंद उछालना चाहे, it's gone fine, it's gone fine this time. A long chase for the field, it might been considered, no it won't, and it's crossed over the fence. तो इस वक्त रन से मिले जरूर, लेकिन रन से जो चाहिए थे वो मिले. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर समझ नहीं पाए, गेंद निकली इस वक्त फाइन, और लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को इस वक्त रोकने में असफल. बाई के रूप में ये रन मिल चुका है 4, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर. 15 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट, एंड 4th ओवर हैज बीन केम शोनन. एक और बेहतर ओवर, अगर अंतिम गेंद पर चौका बाई के रूप में नहीं मिला होता तो निश्चित रूप से वीर वेंकटेश की गति और स्थिति काफी शोचनीय होती. क्यों सतीश? Exactly, Gopi. More disaster, isn't it? The gifted runs, which is 4 in the form of Pai in the last delivery of the over. But have a look at his bowling figure, Gopi. Gautam Pai once again leading from the front. We picked up 2 wickets. At the same time, he picked up 2 catches in the deep. So he's a man, he's absolutely busy customer in the big final. They're picking up 2 valuable wickets. And still, Gopi, 2 overs remaining. And needed some acceleration, and more than anything else, Gopi, the partnership is very important. Exactly, Satish. Acceleration के साथ partnership इस वक्त जरूरी है. तैनात ओवर द विकेट, ये गेंद हल्की गेंद, बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी दीपक कामत की. पहले ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी, सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए 2 विकेटों को उन्होंने प्राप्त किया है. अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. तैनात ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. अगली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद हवे में, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं एक्स्ट्रा कवर पर, और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट पैंथर्स सुपर लीग 2025 इज नाउ प्रोग्रेसिंग, व्हिच इज प्राउडली प्रेजेंटेड बाय डेडली पैंथर्स. और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति करती हुई, और ऐसा कहना पड़ेगा क्लाइमैक्स इस श्रृंखला का यहाँ पर गुजरता हुआ. और इस पैंथर्स सुपर लीग 2025-2025 का खिताब
प्राप्त करने के लिए, चैंपियन कहलाने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब और वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के बीच। और गेंदबाज इस बीच दीपक कामत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दीपू नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार टॉप एज, मौका हो सकता है, विकेट कीपर नहीं, स्वयं गेंदबाज पहुंच चुके हैं और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। Just trying to play the blind stroke at the last moment. Have a look at this in the replay. गेंद इस वक्त धीमी गति की गेंद थी, गेंद के धीमेपन को समझ नहीं पाए, टॉप एज पर गेंद टकराई और आसान सा कॉट एंड बोल्ड इस वक्त गेंदबाज लपकते हुए। 8 विकेट डाउन और निश्चित रूप से हर विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा वीरा वेंकटेश वॉरियर्स इस वक्त मुश्किलों के दलदल में और धंसता हुआ और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज यहाँ पर Weekend Sports Club के 16 for the loss of 8 wickets, 5th over in progress. This is an absolutely shackling progressing year for the batsmen of Veera Venkatesh Warriors. और जहाँ तक सवाल है, नंबर 10 बैट्समैन is now comes out to the middle और दिलीप जो कि नंबर 10 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त दीपक कामत की गेंद का। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, 9 गेंदें बाकी है, इन 9 गेंदों को बचे हुए 2 विकेटों की मदद से खेलना होगा। वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के बल्लेबाज को और जितने भी रन बने उन्हें बटोरना होगा अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है, तो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो इस बीच गेंदबाज दीपक कामत फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दिलीप पई नए बल्लेबाज। यह गेंद इस बार फुल टॉस ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, जस्ट सिंगल गॉट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 17 रनों पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 8 बॉल्स रिमेनिंग इन द इनिंग्स। विघ्नेश नहीं एक छोर पर मौजूद और जहां तक विघ्नेश नहीं का सवाल है, वो एक कुछ हद तक आक्रामक स्ट्रोक खेलने की क्षमता रखते हैं और इस पहले के मैचेस में भी उन्होंने दिखाया कि वो करारा प्रहार रख कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरत है कुछ चौके और छक्कों की यहाँ पर वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के बल्लेबाजों को अपनी टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन देने के लिए। और इस बीच गेंदबाज दीपक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, इस बार गेंद पहुंच चुकी है डीप कवर पॉइंट पर, फील्डर दौड़ कर आए, थोड़े से पीछे तैनात है, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 19 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट। स्टिल द बैट्समैन ऑफ वीरा वेंकटेश वॉरियर्स सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और गेंदबाज इस वक्त तैयार दीपक कामत इस ओवर में अंतिम बार विघ्नेश सेना के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद को हल्के से खेल दिया इस वक्त मिड विकेट पर और जब तक डीप मिड विकेट से फील्डर आकर गेंद को फील करे 1 रन का इजाफा हो चुका है। 20 ऑन द बोर्ड, 5 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर, 5 ओवर्स कंप्लीटेड और सतीश ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त भी वही हालात इस वक्त गुजरते हुए वीरा वेंकटेश वॉरियर्स के लिए। 24 आफ्टर 5 ओवर्स, अंतिम ओवर में कम से कम 10 से 15 रन बटोरते हैं तो शायद एक गौरवार्ह स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। Exactly, Gopi. We can expect 10 to 15 runs from the last over because Vignesh Shena is still is in the middle and he's in the strikers end as well. He just picked up a single in the last delivery of the over, just making sure that he will going to take the strike in the last over. And at least 2-3 big shot, Gopi, in this last over. What we are talking about, not a big total, but a competitive total. 30 plus runs, 35 is definitely going to be a competitive total. What team Veera Venkatesh need to get, desperately wanted to get. Otherwise, it is going to be so easy for Weekend Sports Club when they're going to chase their runs, which is less than 30 or less than 25. It might be the easy task for the Weekend Sports Club. And wait to see, Gopi, how well the batter Vignesh and I will going to reply in this last over. एग्जैक्टली सतीश, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ आदेश भट्ट यानी आदि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। विघ्नेश ने इस वक्त सामना करते हुए ग्रैंड फिनाले इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत PSL के अंतर्गत इस वक्त गुजरता हुआ पहली गेंद धीमे लेग कटर गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, अंतिम क्षण में गेंद को छोड़ दिया कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। और निश्चित रूप से ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल पैंथर सुपर लीग 2025-2025 सीजन 4 सीजन 4 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ ये गेंद इस बार फ्लाइटेड, बेहतर, फैंटास्टिक, वन मोर गुड डिलीवरी, फ्लाइटेड वन, टॉस किया था गेंद को इस वक्त और उछाल कर खेलने में चूके और अंपायर ने इशारा किया कि दे आर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो कि लिया था उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की यहां पर वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब के गेंदबाजों ने। अब 4 गेंदें उनकी पारी में बाकी और इस बीच आदेश भट्ट
अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। विघ्नेश शेणा इस वक्त सामना करते हुए। The scoreboard stands at 20 for the loss of 8 wickets in the over number 6 and the last in progress in their innings. और गेंदबाज आदेश भट्ट अगली गेंद लेकर तैयार है। ये गेंद इस बार उछाला, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है डीप मिड विकेट पर और गेंद इस वक्त वहां पर लपक ली गई है। दमदार स्ट्रोक जरूर, लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत। हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। गेंद को उछाला था, धीमी गेंद थी और करारा प्रहार जरूर, लेकिन गेंद सीधे पहुंची डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे उनके हाथों में। और इस वक्त उन्होंने कैच को लपकने के बाद इशारों से कहा कि धन्यवाद। तो नवा विकेट इस वक्त गिर चुका है। 20 for the loss of 9 wickets. Vignesh Shena departs and now just a last wicket remaining in there is just 3 balls left, 3 गेंदें बाकी और इंतजार है इस वक्त नंबर 11 बल्लेबाज का। We are just waiting for the number 11 at the last batsman and he now comes out to the middle. गुरुदास और इस वक्त वो स्ट्राइकर पर मौजूद लंबे कद के खिलाड़ी और इस वक्त आदेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। 3 balls left in overall calculation in their innings. दाहिने हाथों पर द विकेट, आदेश की गेंद, फ्लाइटेड गेंद, रिवर्स शॉट खेलना चाहा और गेंद इस वक्त रिफ्लेक्शन होता हुआ स्टंप्सों पर, लेकिन शायद वहां पर बिल्स डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन रिवर्स शॉट इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके थे। बेहतर गेंद थी, विकेट और अभी भी रिफ्लेक्ट होते हुए, लेकिन बिल्स इस वक्त डिस्टर्ब नहीं हुए। तो इस वक्त दूसरी बार भाग्य बल्लेबाज का साथ देता हुआ इस पारी में और बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त आदेश भट्ट यानी आदि इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथों ओवर द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गुरुदास शेना इस वक्त सामना करते हुए आदेश भट्ट की अगली गेंद का। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए उछाला इस वक्त दमदार स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर इस वक्त 6 रनों के लिए। एक गेंद अभी भी बाकी है और यहां पर देखिए बल्लेबाज के पास काफी वक्त था इस गेंद को उछालने का। He just lofted that one in a style and just got that one for a maximum or deep mid wicket fence for a 6. नंबर 11 बल्लेबाज के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और ये छक्का वीर वेंकटेश वॉरियर्स के पारी में कुछ हद तक एक्सेलरेशन ला चुका है। अंतिम गेंद बाकी और देखना है कि इस अंतिम गेंद पर गुरुदास शेना क्या करते हैं। आदेश छक्का प्रदान करने के बाद अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। यह गेंद चूके इस वक्त थर्ड मैन पर वाइड का इशारा और नॉट सेकंड पर खतरा इस वक्त, हालांकि गेंद को टटोलते रह गए शॉट थर्ड मैन के फील्डर और वाइड इस वक्त घोषित किया जा चुका है। 27 for 9 और अंतिम गेंद अभी भी बाकी। आदेश भट्ट छक्का प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव में नजर आते हुए अगली गेंद उन्होंने वाइड फेंकी और इस ओवर में अंतिम बार तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। आदेश टू गुरुदास। यह गेंद बेहतर गेंद थी, गेंद को खेलना चाहा चूके विकेट कीपर नहीं, गेंदबाज जब तक गेंद पर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। So the innings is for वीर वेंकटेश वॉरियर। They finished with 28 for the loss of 9 wickets. अंतिम ओवर में गुरुदास शेना का छक्का उनकी रन की गति को कुछ हद तक एक्सेलरेशन लाने में सहकारी बन चुका। 29 the target for Weekend Sports Club to become the champion of Panthers Super League 2025. 28 they have to score. सतीश लक्ष्य ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहना यहाँ पर मुश्किल है और देखते हैं यहाँ पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकेट स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति यहाँ पर अपनाते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया। फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस गिवन बाय द बॉलर्स ऑफ विकेट स्पोर्ट्स क्लब एंड बिकॉज ऑफ दैट they restricted the batsmen of Veera Venkatesh Warriors for just 27 runs. 28 the target for them to become the champion of Panthers Super League 2025. देखते हैं उनके वो इस 28 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं। फिलहाल उनकी पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद और एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे इस श्रृंखला में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट। मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ अंग्रेजी में जब यहाँ पर वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
Thank you so much. Welcome back. Thank you so much, SVS Band, for your wonderful entertainment in this the 2 days of cricket tournament, and we are into this final innings of the prestigious Panthers Super League 2025. Thank you. Welcome back. And coming to the target, it's not a huge target to chase down, and just a 29 to become the champion. First time for Weekend Sports Club. Of course, in the first time they are taking participation in this cricket tournament, and definitely they will going to make the history that first appearance, first champions. The dream is absolutely the wide open. After that, the bowlers did a great job. The batter have to justify. But a lot of hard work is required from Veera Venkatesh to restrict their opposition. The first ball down the leg side, try to turn the ball on the onside region. The fielder tried to use his feet to stop the ball, but ample time for the batter to come back for the couple of runs. So straight away, they're off the mark. 2 without loss of any wicket. Just like my friend mentioning about, of course, the cricket, you can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty. It's a funny game. And perfect example, Gopi, the last Sunday. And different ball game, the Underarm cricket and Gaurav Trophy. And the same thing is happening in the mega final as well. 23, which is depended by the team in the batting first. And that team is Torpedoes Khana. And they again played it nicely into the mid-wicket region for the single. They wanted to come back for the second. In comes the throw. And they got a couple of runs. But of course, Gopi, this kind of unexpected result will not going to happen regularly in cricket, isn't it? Sometimes it happens and incidents. And but I think the Weekend Sports Club definitely is aware of that, because why the cricket is a funny game. It's unpredictable game. You cannot underestimate any low total, and 2-3 quick wickets can change the game. Here comes Sudhindra Hegde from the far end. Right above the wicket balls. This time, what we are talking about, it might be a wicket number 1. It might be a wicket number 1, and it is a wicket number 1. The batter is back in the pavilion for the juicy full toss. Well, just have a look at it in replay. Shuffled across the line of the dead. He wanted to go for the big one, and he played it very high, mistimed the ball, and of course Kirtan Prabhu is making no mistake at all. The wicket number first is gone. It's 4 for 1. So last match hero, Shivanand walking towards the middle. Know what a tournament he had, especially in the do-or-die match. In the last match, the qualifier number 2, he's been outstanding from his bat, and now he's came into bat here. Not a big total to chase down, and not a big target to set down, but just a 29 required to become the champion. Here comes up next. Oh, bowled him! Bowled him! Cleaned him up! Sudhindra Hegde is absolutely open the gate. He's absolutely opened the gate here for the team. Veera Venkatesh are now slightly back in the game. It's 4 for 2. Well. And Gopi, just you are talking about we are just reviewing the page and of the history in the UCG cricket ground. Not want to go back a lot, just 1 week back. The same scenario in the UCG cricket ground, and again looks like VB cricketers also wanted to continue that story in this mega final as well. बिल्कुल सतीश, क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल है जब तक ना अंतिम गेंद फेंकी जा रही है। यहाँ पर शिवानंद का स्ट्रोक था, कुछ हद तक गैर जिम्मेदाराना कहा जा सकता है, इर्रेस्पॉन्सिबल स्ट्रोक। विकेट 4 रनों पर गिर चुका है। इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत है। लक्ष्य है सिर्फ 28 का, और शिवानंद ने तुरंत इस वक्त आक्रामक स्ट्रोक का खेलना चाहा, मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहा, लेकिन यहाँ पर पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में उनका विकेट इस वक्त गिर चुका है। शिवानंद का विकेट गोल्डन डक के रूप में गिर जाने के बाद सहज रूप से नेचुरली दबाव इस वक्त विकेट स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों पर आ चुका है। Exactly, Gopi. गैर जिम्मेदारी, the perfect word to use. Irresponsible cricketing stroke is attempted by the man is great form again. This is what it is. Oh, chance of run out as well. It need to be quick enough.
You need to be quick enough. The fielder is inside the ring, but not quick enough to make the run out. But both the batters are completed single. But risk which is taken by both the batters. And well, Gopi, I'm not really understand why the weekend sports club batters are feeling that much of pressure. No need to panic at all, isn't it? But all we can see that this is a mega final. This is the pressure, isn't it? There's nothing the pressure. They're not feeling the pressure of the chasing of 29 runs. The pressure from in the minds of the batters is that trophy, which is very attractive trophy, that might be the big pressure, which is they feeling here in the right now in the middle. And wait and see. The 5 for 2. And Sudhindra Hegde, after he got 2 wickets, but they only won 2 hurdles, but they have to pick another 8 wickets if they wanted to win the match. It's not good enough. But only sensible batting will going to take Weekend Sports Club to win this match. Well, Gautam Pai, the key man, very, very talented, very potential, and of course, he's got every technique. What you can say that getting the runs in this format, and left the ball. You are seeing Gopi, the rare occasion in the 6-over format game, leaving the ball. And leaving the ball, Gopi, is it's not a bad thing to do. It's one more good technique, isn't it? So survive from caught behind the wicket. But altogether, it's a good start, isn't it? Sudhindra Hegde has given a start here, but that start is not good enough, Gopi. And other bowlers have to capitalize the start which is given by Sudhindra Hegde. बिल्कुल सतीश, सुधींद्र हेगड़े ने बेहतर शुरुआत गेंदबाजी में जरूर दी है, लेकिन उस बेहतर शुरुआत को इस वक्त आगे बढ़ाना है आने वाले गेंदबाजों को। और जहां तक सवाल है, इस वक्त अंतिम गेंद पर जिस तरह से गेंद को लीव किया था टेस्ट क्रिकेट शैली में, और यहां पर ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि विकेट बचाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। और ओवर्स 5 इस वक्त बाकी पड़े हुए, 30 गेंदें बाकी हैं, 23 रन चाहिए, 23 टू गेट फ्रॉम 30 डिलीवरीज। और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज दीपक कामत और गौतम पई इस वक्त विकेटों की सुरक्षितता पर ध्यान देते हैं, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जहां तक सवाल है इस वक्त वीरा वेंकटेश के गेंदबाजों का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए चंदा और विकेट। Well, Gopi, the wicket what we are talking about, and Gurudas looks like he's celebrating here. I don't know what really happening, but they're celebrating. But we need to wait for the umpire decision. We need to wait for the umpire decision. What really happened here? Just have a look at it in the replay. Try to. Oh, this is not a replay. This is what the dismissal of the previous over. It all is under pressure. Even our technician is also under pressure. What we are feeling here is that the previous dismissal what talking about, if it going to be a batter is out of the crease, will it the batter is safe, and wait and see. And if it is a wicket, Gopi, certainly the third hurdle, what the Veera Venkatesh bowler is going to pass, and wait and see. This is what the cricket is all about, isn't it? Beauty of cricket. Why the cricket is religion. Why the cricket is absolutely loved by the most of the people. The reason behind this is the matches like this. And this is I'm really loves, Gopi. The way that the believeness is so important in cricket, and the way that the bowlers of Veera Venkatesh, even though knows that they're depending a small total, but they're not really given up, and they're trying their level best. This is what I want to see in the cricket field, the grave and gutsy. It's very important here, and let's wait and see what could be the decision here from the third umpire. Everyone's eyes into the commentary box first time, not listening our voice, but only to see what going to be the decision here from the third umpire. Will it going to be out or not out? Well. The out is a call from the third umpire. The wicket number 3 is gone. The match is still alive. It's 5 for 3. The match is not yet over. Gurudarshanai is adding one more wicket to his total. It's become the 13, I think. So 13 wickets in this prestigious Panthers Super League 2025. What an outstanding bowling display this from the tallest player of this tournament. Gurudarshanai knows that there's got a one wicket, but it's not good enough for his team. You know exactly what to do in the remaining. The new batter in is coming to the middle, Gokul Gadiar. And Gokul Gadiar, wait and see how well you're going to handle the pressure. Here comes Gurudash again, away from us. Right arm over the wicket. This time lovely cricket, intelligent cricket there from Gokul. Not really try to hit the ball pretty hard, but just a soft and just delicate touch. It's good enough to get that single down to point revision for a single. With that single scoreboard moves on to 6 for 3.
What a fantastic. We thought that it's going to be a one-side final when it is going to be a 29 target for Weekend Sports Club. They were going to finish it off the things with a 4 overs. But what we are watching here is the battle is on. Still the battle is on. Right over the wicket again. Off the backward, Gautam played it very nicely in the square of the wicket. The Gautam Pai, just I mentioned about, he is a key man now for the Weekend Sports Club. Take his ship very safely to the destination. And of course, if you underestimate, just like always I'm mentioning about, a small leakage can sink a big ship. You cannot underestimate the total what they're chasing. They have to give their 100% to win this match. Here comes again, tried to york the batter, but negotiated very well by Gokul Gadiar. Just watching the ball till the last moment, showing the full face of the bat. Picked up a single. Both the batters are doing right thing here, and just playing as per the condition required for the team. No need to panic at all. But lot of hard work certainly is required here for the bowlers of Veera Venkatesh to depend at 29. 8 which is completed. That means 21 needed from 26 deliveries. Here comes Gurudas. Right arm over the wicket balls. Oh, beautifully bowled. That's very close to the off stump and even the edge of the bat as well. All we can see, there's a heart in the mouth when the ball is just past the stumps and the bat. The supporters of a Weekend Sports Club is absolutely, they are the pin drop silent in both dugouts. That's what's the seriousness of the big final here. 8 for 3. Gurudas Sanesh searching for the wicket. Away from us. Balls defensively played. You know exactly what to do. Gautam, he knows that this is the last delivery of Gurudas Chennai. Have to give the respect for that one. And Gopi, 2 overs gone. It's 8 for 3. Not a different story and comparison between these two. After completion of 2 overs, even the team Veera Venkatesh is also struggling in the middle. And here also. But one thing here is sure, Gopi. The team Weekend Sports Club, they know exactly what target they are chasing. This is what the benefit for the chasing team, isn't it? The batting first is absolutely different, and chasing means they know exactly what to do in the situation like this, and might be still, Gopi, the 70-30, the match is in the hands of both. 70% in the hands of chasing team, 30% in the side of team VV cricketers, but VV cricketers have to convert that 30% into 100%. They have to pick another 2 quick wickets. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर तख्ता कुछ हद तक भारी लगता हुआ यहाँ पर वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब का, लेकिन यहाँ पर मौका जरूर है कमबैक करने का वीर वेंकटेश वॉरियर्स के लिए। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों का, गोकुल गडियार और गौतम पई को इस वक्त वो जानते हैं कि समीकरण क्या है। 21 टू गेट फ्रॉम 24 डिलीवर्स। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपना लिया, और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, पहले बल्लेबाजी करने में और लक्ष्य का पीछा करने में काफ़ी फर्क होता है। यहाँ पर लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज, तो समीकरण के अनुसार इस वक्त उन्हें बल्लेबाजी करनी है। और देखने क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज गोकुल गडियार और गौतम पई प्रेशर, दबाव को किस तरह यहाँ पर हैंडल कर पाते हैं। Exactly, Gopi, handling the pressure is so important in a situation like this. Here comes the first ball of the over, number 3. Again off the back foot. A lot of time for the batter to judge that short pitch delivery from Sudhindra Hegde. Usually is a very good in line and length, but this time I think it's a little bit short pitch delivery and enough time for Gokul Gadiar. Gokul Gadiar so far I think is very much focused and very much composed, and he's just respecting the condition. Just watching him is absolutely never looks like he's worried about that condition, but he's just wanted to play as per the condition required. 9 for 3. Here comes the right arm over the wicket. Oh, bad miss. What going on here? The boundary comes off in the form of bye. It's from the bat. Looks like it's inside edge of the bat. My goodness. Just have a look at it in replay. Oh, that's a deflection. That was outside edge of the bat, and it was just passing between the leg of wicket keeper. No protection behind him, and the ball went into the boundary, and welcome boundary comes here for the team Weekend Sports Club. The pressure is off with that boundary. Scoreboard 13 on the board for the loss of a 3 wicket. Sudhindra Hegde, right arm over the wicket, short pitch delivery. The wait for the umpire. It's 1 from the over. What umpire is saying? It's 1 from the over. 1 bouncer. Gautam is just seeing that umpire can give that wide, but umpire says it's 1 from the over. It's the 1 bouncer which is allowed, and no damage and just a dot ball. 13 for 3. Sudhindra from the far end. Right above the wicket again. It's absolutely perfect cricket there from Gautam Pai.
sensible cricket what we are talking about, and they are just dealing with the singles, rightly so. They needed like that only, and in a situation like this, they're not needed any big shots. No need to panic at all, but Sudhindra Hegde have to do something special here, because already runs came from this over, and the required run is coming down now. It's 15 needed from 20 balls. Sudhindra again. Right above the wicket, played it nicely. I'm really impressed with the Gokul Gadiar. Of course, Gautam Pai is a very experienced campaigner, very aware of the situation like so many times in his career. But have a look at the Gokul Gadiar, the way that he is respecting the condition. This is what the quality of some batters. Assessing the condition and respecting the condition is so important in cricket. And so far, both the batters are absolutely, they are not given any single opportunity for the opposition. And so far, after that, lost 3 quick wickets, 15 for 3. Last time in this over. Right arm over the wicket, there he was. Oh, almost he drags the ball into the stump. Luck favors the brave. What happened here for Gautam Pai again? The one more over completed, and Gopi, I think this over, a little bit unlucky because not confident looking shot. It's the inside edge of the bat, defeat the wicket keeper. And if we exclude that boundary, Gopi, definitely it's a good over. And but still, I think weekend guys are looking in commanding position. 3 gone, 15 for 3. Another 14 required from another 3 overs, isn't it? And 18 ball, 13 and 14 required. And what is your opinion about the remaining 3 overs? How could the game will going to change here? And is there an opportunity for the team VV cricketers to back in the game? Because 15, Gopi, the number is 14, which is number maybe the very small. But just like I always mentioning about, you cannot underestimate in cricket that numbers. But still, Gopi, the match is in the hands of Weekend Sports Club. They are in a driver's seat. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर विकेट स्पोर्ट्स क्लब का तख्ता भारी लगता है। और जहाँ तक गोकुल गडियार और गौतम पै जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। हालात को समझते हुए इस हालत में वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए काफी सेंसिबली, और इस बीच गेंदबाज तैयार, पहली गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, सेंसिबल। इस वक्त वरी स्लॉन्ग ऑल फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर। तो निश्चित रूप से कमबैक करना है इस वक्त वीवी वीर वेंकटेश वॉरियर्स के गेंदबाजों को। तो यहाँ पर विकेटें उखाड़ने होंगे, खासकर इस जोड़ी को यहाँ पर तोड़ना होगा जो गोकुल गडियार और गौतम पै के बीच में इस वक्त जम रही है। और इस बीच गेंदबाज विघ्नेश शनाई दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद दिस इज स्लॉपी, दिस इज एन एब्सोल्युटली नॉट अ गुड बॉलिंग। लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद फेंकी इस वक्त, और इस बीच वाइड घोषित करते हुए लगभग मेरे ख्याल से 12 रन अब तक बन चुके हैं चौथे विकेट के लिए। और ऐसा कहना पड़ेगा स्लोली एंड स्टडीली दिस पार्टनरशिप इज नॉट बिल्डिंग अप फॉर देम। और इस बीच विघ्नेश शनाई अगली गेंद लेकर तैयार, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर। 18 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों का, तो रन से इस वक्त चाहिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार था। हाथों पर द विकेट विघ्नेश शनाई की गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, खूबसूरत सेंसिबल इस वक्त काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हुए गोकुल गडियार और गौतम पै। 3 विकेट जब गिरे थे तब दबाव साफ दिखाई दे रहा था उनके कंधों पर, उनके बल्लेबाजों के कंधों पर, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गोकुल गडियार और गौतम पै ने बल्लेबाजी की है काफी काबिल तारीफ है। कोई जोरदार स्ट्रोक्स इस वक्त नहीं खेलते हुए और स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल्स के साथ। और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस बार कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, इस वक्त थ्रो पहुंचा, लेकिन थ्रो इस वक्त काफी वाइड रहा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 14 बॉल्स लेफ्ट एंड 9 रन्स रिक्वायर्ड। और what a fantastic partnership is now building up for Weekend Sports Club in this situation between Gokul Gadiar versus Gautam Pai. अगली गेंद गेंद ऑफ कटर, अंतिम क्षण में काफी हद तक अंदर की ओर आती हुई गेंद की टर्न को इस वक्त भाप नहीं पाए। अंतिम क्षण में बल्लेबाज स्वयं आश्चर्यचकित रह गए कि गेंद इतनी ज्यादा टर्न क्यों ली है और गेंद इस वक्त सीधे पॉइंट पर फील्ड कर दिया गया। डॉट गेंदों की सख्त दरकार वीर वेंकटेश वॉरियर्स के इस मैच में कमबैक करने के लिए। विघ्नेश शनाई इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हैं, फुल टॉस, बल्ले का बाहरी किनारा, इस वक्त पहुंची गेंद पॉइंट पर 1 रन का इजाफा। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 21 ऑन द बोर्ड। सतीश एक और बेहतर ओवर, इसमें दोनों बल्लेबाजों ने सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाई है। अब द थिंग्स गेटिंग much easier for them, 8 to get from 12 deliveries. अब इस ओवर के प्रारंभ से पहले 14 रन बनाने थे, 6 runs came from this over and with this over I must say Weekend Sports Club are now tightening up the screws.
Exactly, Gopi. And if you wanted to back in the game at any time, Gopi, the way to back in the game is picking up wickets. And so far, I think after the bowlers of VV cricketers, they picked up 3 wickets. But after that, we can see that they are trouble to break this partnership. And Gokul Gadiyar and Gautam Pai, with that they are building the partnership, has been outstanding. And one more thing, Gopi, in this last 2 hours, I'm observing is that both the batters are dealing with the singles. They are dealing with the singles, but I'm not observing any attacking field set here from the captain of the opposition. You know, they're not chasing a big total. Of course, no use of keeping every field as a 5 fields outside the circle. Of course, that is the one rules which is given. But not like that you have to keep that 5 fielders in the deep. When is one rotation of strike is required, I think the captains absolutely need to see that there need to be some attacking field set to save the singles. But both the batters are really using that advantages. Everyone is edge of the circle. They're rotating the strike and they're playing as per the condition record now. But still, Gopi, still the match is on. Because 8 needed from 12 balls. And this over is going to be very crucial. If the bowler is going to get 1-2 wickets with a couple of runs, that will go into very interesting last 2 overs. बिल्कुल सतीश, इस ओवर में किफायती गेंदबाजी अगर गेंदबाज करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर कम बैक कर सकते हैं वीर वेंकटेश वॉरियर्स। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस वक्त सिंगल्स के साथ डील कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। तो इस वक्त हैरानी के बाद आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि क्यों इस वक्त वीर वेंकटेश वॉरियर्स के कप्तान क्लोजिंग फील्डिंग, सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर नहीं सजाई है सिंगल्स रोकने के लिए। तो इस वक्त एक 2 फीडर को लगाया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और एक शॉर्ट मिड विकेट पर। तो इस वक्त गौतम पई और गोकुल गडियार की नजरें गेंद पर जम चुकी है और देखना है कि बचे हुए 12 गेंदों में वो 8 रन बना पाते हैं या नहीं। पहली गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे और गेंद का लंबा पीछा करते हुए फील्डर 2 रन पूरा कर चुके हैं, 3 रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ और 3 रन यहां पर बटोरने में सफल गोकुल गडियार। मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को इनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से उछालने में सफल। 3 रनों के साथ समीकरण इस वक्त आसान होता हुआ। द इक्वेशन सीम्स टू बी मच इजियर फॉर देम नाउ। 5 टू गेट इन रिमेनिंग 11 बॉल्स और इस बीच गौतम पई सामना करने के लिए तैयार अंडर प्रेशर। ये दोनों बल्लेबाजों ने अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया है। 5 रन पर जब 3 विकेट गिर चुके थे तब ऐसा लग रहा था कि वीर वेंकटेश के गेंदबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद गोकुल गडियार और गौतम पई ने मिलकर 19 रनों की साझेदारी अब तक जोड़ी है। इन संदिग्ध हालातों में निश्चित रूप से अंडर प्रेशर एक बेहतरीन साझेदारी यहां पर कही जाएगी। ये गेंद ड्राइव कर दिया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। विकेट मिड ऑफ द फील्डर काफी पीछे तैनात था। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 और 25 ऑन द बोर्ड। दैट मींस जस्ट 4 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 10 डिलीवरीज। और निश्चित रूप से अब ऐसा कहना पड़ेगा वीर वेंकटेश वॉरियर्स को एक घातक गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है। ये गेंद इस बार चिप किया गेंद को कवर मिसफील्ड इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर द्वारा। जब तक खुद पीछे की ओर जाकर डीप कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल 27 ऑन द बोर्ड और ये 2 रन इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा विकेट स्पोर्ट्स क्लब को विजय के अति निकट पहुंचा चुके हैं। जस्ट 2 रन्स दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री टू बिकम द चैंपियन ऑफ पैंथर्स सुपर लीग 2025 व्हिच प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेडली पैंथर्स सीजन 4। इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर जस्ट सिंगल और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। अब सिर्फ एक मात्र रन चाहिए चैंपियन का खिताब अर्जित करने के लिए यहां पर वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब को। और इस बीच नागेश पई गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार गौतम पई और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ और इसी के साथ वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब बिकम द चैंपियन ऑफ पैंथर्स सुपर लीग 2025 डिफीटिंग Veera Venkatesh Warriors in the grand finale and they become the champion of Panthers Super League 2025. So what a fantastic match and also a fantastic tournament came to an end. Kyo Satish? Well, Gopi, the well-deserved victory for Weekend Sports Club because with that the bowlers are they really set a stage for the batters to get that 29 runs in this match and even congratulations for Weekend Sports Club for the becoming the champion. Congratulations for the VV cricketers as well because the winning and losing is a part of cricket, but both of the teams are played a wonderful cricket in the mega final as well. And that's it from the commentary box. Myself, Satish Sale, and in English, Mr. Gopi will going to give a special thanks to the organizer being the part of this cricket tournament. And we are in a short break. We are back in that post-match presentation ceremony.
Thank you. Thanks a lot. आणि गेल्या क्षणानं ट्रॉफी गिविंग सेरेमनी स्टोर जावचार आसा.
जावन डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हंगेल तर्फेन हृत्पूर्वक जावन स्वागत करता. तशीची वेदिकेरी V2 माया ट्रेडर्साच्या लक्ष्मण कामत हांणी आमगेलो टू वेदिकेर आसाची. तशीची महामाया ग्रुपाच्या चैत्रेश अण्णा हांणी आमगेलो टू वेदिकेर आसाची. तशीची आमगेलो टू वेदिकेरी पंडित काशीनाथ आचार्य माम हांणी वय आमगेलो टू वेदिकेर आसाची. तशीची हुंडी प्रभा मॅम हांणी आमगेलो टू वेदिकेर आसाची. हांकां सक्कडांकय तशीची आमकां ह्या टुर्नामेंटांतू गाडी दिवन आमगेल्या मॅन ऑफ द सिरीज हांकां गाडी दिवन स्पॉन्सर दिलें तसलें आमगेल्या श्री अनगा सुजुकी हांगेल तर्फेन इल तसलें दोग जन गण्य व्यक्ती आमगेलो टू वेदिकेर आसाची. हांकां डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड हांगेल तर्फेन हृदयपूर्वक आनी हृदयपूर्वक जावन स्वागत करूं इच्छी पावता. तशीची आनी कसले डिले नाशी मुखारचे प्रोग्राम स्टार्ट करचेर आसाची. आयल तसल्या गण्य व्यक्तींक स्वागत करून जाल्ल्या तांकां एक मोमेंटो दिवन स्वागत करची म्हणटा आमी आतां पावलेची. सुरवेक आमगेलो ट्रस्ट आसल्या अरुण कामत माम हांकां एक मोमेंटो दिवन स्वागत करता म्हूण निमगून घेता. अरुण कामत मामाक मोमेंटो दिवका म्हूण सांगून पवन हांकां वेदिकेर आपयतास. तशीची आमगेलो टू नित्यानंद भक्त माम आसाची. हांकां स्वागत करता म्हूण सांगून तशीची आमगेलो टू वेदिकेरी वी बाजाराच्या मालक जावन आशिल्ल्या सुमित भट हांणी आसाची. हांकां अतुल हांणी मोमेंटो दिवन स्वागत करता म्हणून निमून घेता आसा. तशीची आमगेलो टू वेदिकेरी V2 माया ट्रेडर्साच्या लक्ष्मण कामत अण्णा हांणी वेदिकेर आसाची. हांकां पवन हांणी मोमेंटो दिवका म्हूण सांगून निमगून घेता. तशीची आमगेलो टू वेदिकेरी महामाया ग्रुप्साच्या चैत्रेश अण्णा हांणी वेदिकेर आसाची. हांकां निखिल हांणी मोमेंटो दिवन स्वागत करता म्हूण निमगून घेता आसा. तशीची आमकां मॅन ऑफ द सिरीज गाडी दिलेल तसला श्री अनगा सुजुकी हांगेल तर्फेन आयलेल तसल गण्य व्यक्तींक स्वागत करता म्हूण सांगून दयानंद हांगे लेगीत निमगीत आसा. तशीची जल्लल तसला क्वालिफायर्स आणि एलिमिनेटराच्या तशीच आमगेल वेदिकेरी
संदेश अण्णा हंका स्वागत करतस हनका श्रेयस हन्नी मोमेंट दिवका म्हणून सांगून निमून घेतस तशीची आमगेलोट वेदिकेरी सिद्धार्थ डिजिटलच्या समर्थ सची हंका आणि सिद्धार्थ हंका वेलकम कोर का म्हणून सांगून विवेक हन्नी मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून निमून घेतस तशीची आमगेलोट वेदिकेरी काशीनाथ आचार्य मसाची हंका मधु भट हन्नी मोमेंट दिवका म्हणून सांगून निमून घेता तशी आता जल्लल तसला क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर हज्जा मॅन ऑफ द मॅच संघच्या टाइम आयला फॉर क्वालिफायर्स 1 द मॅन ऑफ द मॅच गोज टू एनी गेसेस हरिप्रसाद फ्रॉम वीर वेंकटेश वॉरियर्स हंका अरुण मम्मान अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेता तशीची एलिमिनेटराच्या मॅन ऑफ द मॅच जावन एनी गेसेस none other than Rohan Nayak from Weekend Sports Club. Anka Kashinath Acharya Mamana मोमेंट दिवका म्हणून सांगून मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेता तशी क्वालिफायर 2 वाच्या मॅन ऑफ द मॅच जावन अपास रोहन नायक तांका चैत्रेश अण्णानं मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेता तशीची आमच्या टुर्नामेंटाक लाईव्ह दिवन सहकार केलेलो तसल्या आमगेल्या बेद्रा मीडिया हंका हंगेल्या एक प्रतिनिधीनं वेदिकेर येवन एक सान स्मरणिक घेवका म्हणून सांगून निमून घेता बेद्रा मीडिया हंका संदेश शनै हन्नी मोमेंट दिवका म्हणून सांगून निमून घेता ಮತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ आयच्या आमच्या टुर्नामेंटाच्या अंपायर्स सकाळ दुखून सकाळ जेवो रात्री जेवो तांणी अंपायर्सान लायक काम केलेलं आसा तांगेल तर्फेन कोणे एकल्यान मोमेंटो घेवका म्हणून सांगून निमून घेता
तांकां सिद्धार्थ हांणी मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. तशीची आमगेल टुर्नामेंटांतू सखण दुखून संजीताई 2 दिवस निरंतर जाऊन कमेंट्री केलेलं तसं आमगेल कमेंटेटर संघ सतीश आणि गोपी आणि वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेता. आणि शैलू आणि वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेता. हंका अवॉर्ड लक्ष्मण कामत हन्नी दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. तशीच आमकां ग्राउंडात सहकार दिलेलं तसं धनू आणि जयण्णा हांणी वेदिकेर येवका म्हणून निमून घेता. आमकां लायक कोरनो चंद कोरनो ग्राउंडाचे अरेंजमेंट कोण दिलेलं तसं हांणी धनू आणि जयण्णा हांकां डेडली पॅन्थर्स हांगेल तर्फेन मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून संदेश अण्णा हांणी दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. सुमित भट हांकां निमून घेता. तशी स्कोरर टुर्नामेंटाच्या तशीची पै इलेक्ट्रिकल्साच्या आमगेल मोगाचो रमेश अण्णा हांणी वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेता. स्कोरराक अवॉर्ड काशीनाथ आचार मम्मान दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. रमेश अण्णाका अवॉर्ड काशीनाथ आचार मम्मान दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. तशीची तशीची फायनल मॅचाच्या तशीच आमगेलो टू वेदिकेरी एन्जॉय टायटन्साच्या विनायक अण्णा आणि असाची हंका मोमेंटो दिवका हंका डेडली पॅन्थर्स तर्फेन हृतपूर्वक जाऊन स्वागत. तशीची हंका मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून एन्जॉय टायटन्साच्या अनेक पार्टनर जाऊन आशिल्ल्या नंदण्णा हांणी वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेत तसं. एन्जॉय गोळी सोडा हंगेल्या ब्रँड म्हणून येता सकड आमगेल्या टुर्नामेंटांत हंगेले एक लायक एक ज्यूस असता तुम्ही सकडाने पिवन असताची हंका मोमेंटो अक्षत हांणी दिवका म्हणून सांगून निमून घेता. तशीची फायनलाच्या मॅन ऑफ द मॅच जावन एनी गेसेस फायनलाच्या मॅन ऑफ द मॅच जावन none other than गौतम पाय तांकां चैत्र शेंडानं मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेता.
तशीची आता आम्ही इव्हेंटाच्या इम्पॉर्टंट स्टेजर पावल्याची कसं म्हणल्यारी टुर्नामेंटाच्या बेस्ट बॅट्समॅन बॉलर्स आणि ಇನ್ನಿತರ अवॉर्ड दिवच्या टाइम आयला फर्स्ट बेस्ट बॅट्समॅन एनी गेसेस बेस्ट बॅट्समॅन जावनो none other than रोहन नायक फ्रॉम वीकेंड स्पोर्ट्स क्लब हांका सुमित भट हांनी मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून निमून घेतलं तांका युनायटेड टेलिकम्युनिकेशन दिलेला आहे दीपकांना दिलं तसला एक स्मार्ट वॉच मेळटाचं तशीची बेस्ट बॉलर ऑफ दिस टूर्नामेंट एनी गेसेस गुरुदास फ्रॉम वीर वेंकटेश वॉरियर्स तांका कुंडी प्रभा कामत मॅम हांनी मोमेंटो दिवका म्हणून सांगून निमून घेता या टूर्नामेंटाच्या एमर्जिंग प्लेयर कोण अशें म्हणून तुम्ही गेस कर का या टूर्नामेंटाच्या एमर्जिंग प्लेयर नन अदर दॅन कीर्तन फ्रॉम वीर वेंकटेश वॉरियर्स हांका मोबाईल प्राइज जावन मेळटा तांका नंदोंडानी विनण्णान या अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेतलं जशीची या टूर्नामेंटाच्या फेअर प्ले अवॉर्ड या अवॉर्ड खंयची टीम म्हणून एनी गेसेस goes to Enjoy Titans. हे अवॉर्ड लक्ष्मण कामत हांनी देवका म्हणून सांगून निमून घेता तशीच ही टूर्नामेंटाच्या लास्ट स्टेजर येऊन पावल्याची कसं म्हळ्यारी एक अनसोल्ड प्लेयर्साक एक प्लेयराक एक सायकल एक गिफ्ट म्हणून दवरलेलं आसा एक प्राइज म्हणून दवरलेलं आसा श्रीकांत आणि वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेतलं हांका चैत्रेश अण्णान अवॉर्ड दिवका म्हणून सांगून निमून घेतलं श्रीकांत हांनी वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेतलं तशीची
तशीची इम्पॉर्टंट स्टेज या टुर्नामेंटाच्या मॅन ऑफ द सिरीज अवॉर्ड एनी गेसेस Man of the series, none other than Gautam Pai from Weekend Sports Club. Search and destroy. Anaga Suzuki, look on 9th Salah. Dhoni representative Hamni. Award you come on Sanguno. Nimgun get this, sir. Gautam Pai Hanka, Suzuki Tangela. Suzuki Access, brand new scooter melta, sir. As a man of the series. Anka a scooter dilal da salanka. Tiki tanni tobbo chunuchi gadi ki diu ka mun sangu nimmun getta sa. Request and backup. Come up for it. Anaga Suzuki ka Deadly Panthers registered अंगेल तर्फेना हृदयपूर्वक जाऊनु धन्यवाद सांगता सची या संदर्भारी थँक यू श्री अनगा सुझुकी गाडी रेक राउंड వచ్చుక ముందు సంగును వినంతి करता सची या टुर्नामेंटाच्या लास्ट स्टेज टुर्नामेंटाच्या थर्ड प्लेस I mean second runners announce करचे टाइम आयला second runners goes to वीरांजनेय क्रिकेटर्स कापू अन्नी प्लेयर्स ओनर समेत वेदिकेर कमून सांगून निमून घेतस हांका मॉडर्न चिप्स आदुकोनु सक्कड 15 प्लेयर्स हांकई एक गुडीज मेल्चारस all 15 players of Veeranjanaya cricketers Kapu.
The second runners of Panthers Super League 2025, Veeranjanaya Cricketers Kapu. The CC. Here we announce the second place, the runners-up of Panthers Super League 2025, Veera Venkatesh Warriors, a team that played all the 4 finals of this tournament, none other than Veera Venkatesh Warriors. I request players, owners, आणि सुरवेक ओनर आना वैर वेदिकेरे कोमंडे मुनगता runners of Panthers Super League 2025, Veera Venkatesh Warriors.
तशीच आमगे लोटो ॲक्टिव्ह स्टॅम्पाच्या मालिक अनिल किनी यांनी असल्याची हानी वेदिकेर येवका म्हणून सांगून निमून घेता. Now it's time to give the champions the award. The champions of Panthers League 2025. The champions of Panthers League, Panthers Super League 2025 goes to Weekend Sports Club. आमका ट्रॉफी करून दिलेलं तसला गणेश मुलकी नायक हंका डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड अंगेल तर्फेनं हृदयपूर्वक जाऊन धन्यवाद सांगतासा. आमका ट्रॉफी कोण दिलेलं तसला गणेश मुलकी नायक हंका डेडली पॅन्थर्स रजिस्टर्ड अंगेल तर्फे हृदयपूर्वक जाऊन स्वागत. तशी ट्रॉफी स्पॉन्सर केलेलं तसला रवी शणे हंकई धन्यवाद. यंग फ्रेंड्स उर्वा हंकई धन्यवाद. And here
we have the champions of Panthers Super League 2025. Here we have the champions of Deadly Panthers. Registered presents Panthers Super League 2025 Weekend Sports Club. Weekend Sports Club, the champions of Panthers Super League 2025. Congratulations, the winners. Congratulations one and all. Congratulations everyone for taking part at this prestigious Deadly Panthers register organized Panthers Super League 2025. Thank you one and all for being present at the finals, at the qualifiers and every matches that taken for this long. Thank you everyone. Me Trivikram Shanai signing off. Thank you. आमकां सपोर्ट केलेलो तसलं सक्कड सपोर्टर्स तशीची आयल तसलं वेदिकेर उपस्थित आशिल्ली तसलं सक्कड गण्य व्यक्तींकय धन्यवाद सांगताची. Hi Trivikram Shanai signing off from today's event. Thank you.